application under Order 6, Rule 17, for which he may be granted liberty to file separate petition. Full stop. My certified copy may be written. कर रहा हूँ. Full stop. This request is not opposed, is accepted. Let certified copy of the order dated. क्या order की date है? Sir, 15/11/2020. 15/11/2022. As contained in Annexure P16 be handed over to Sri Chandraj Dubey on his furnishing a photocopy of the order. Full stop. Next. अब बताइए. Sir, इसमें what was happened in this case, my lord? जी. This is the third round of litigation. इसमें सर one बिनिया बाई has sold the property. बिनिया बाई हमारी cousin sister है, चाचा की लड़की है. बिनिया बाई sold this suit property to one शोभा चंद्रवंशी. In my lord, in the year 2005. Thereafter, in the year 2006, because my lord, we are in the possession over the suit property. The Shobha Chandravanshi was filed at earlier first civil suit, my lord, only for grant of injunction. That civil suit we were filed the WS, my lord. Thereafter, my lord, along with the suit, my lord, the Shobha Chandravanshi was also filed as application under order 39 rule 1 and 2 of CPC, my lord. That was rejected. He filed a miscellaneous petition, miscellaneous appeal, my lord. That was also dismissed as withdrawn because, my lord, he has filed the application under order 23 rule 1 of CPC. And my lord, by annexure P4. Order dated, my lord, 18/4/2007 at page number 46. May kindly see, my lord. Page number 46. 46. नहीं, पहले आपकी बताइए एप्लीकेशन क्या है? 14 ऑर्डर 14 रूल 5 की एप्लीकेशन क्या है? अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज है ना ये? हाँ सर, एक सिंगल एक इशू है, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 बार सूट खारिज हुआ है उनका. हाँ. और ये तीसरा सूट है सर. हाँ. तो 7/11 का आवेदन लगेगा? नहीं सर, उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि उन्होंने 23 रूल 3 का जो 1 का जो एप्लीकेशन मूव किया था, उसमें विदाउट टेकिंग लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश. अगर लिबर्टी नहीं थी तो भी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगेगी. सर, कोर्ट कैन फ्रेम द इशू, माय लॉर्ड. नहीं, अरे भाई, आपको अगर अरे आपके वहाँ लोकल वकील साहब को कानून नहीं मालूम, उसके लिए कोर्ट को कब तक आप जो है दोषी ठहराते रहेंगे? नहीं सर, हम लोग तो प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हमको कुछ नहीं आता. आप लोग जितना सिखाते हैं उतना सीख लेते हैं हम लोग. लेकिन अगर आपका सूट इज हिट बाय रेस जुडिकेटा, 2 सूट ऑलरेडी लग चुके हैं, एक सूट ऑर्डर 23 रूल 1 में विड्रॉ हो गया विदाउट लीव टू फाइल अ फ्रेश सूट, तो फिर मेरे ख्याल से तो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगेगी. इशू क्यों अमेंड होगा 14/5 का आवेदन लग के? इतना आपके वकील साहब को कानून हम थोड़ा ना सिखाएंगे. अभी कर रहे हैं, एकेडमी को खोल रहे हैं वकीलों के लिए भी. सर हमें जुडिशियल एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग होगी. सर हमें लिबर्टी दे दे 7/11 फाइल करने की. लिखिए, हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रेस फॉर विड्रॉल विद लिबर्टी टू फाइल एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन. सर, विड्रॉ में हमारे पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा सर. कैसा ऑब्जेक्शन आ जाएगा? इसमें रेस जुडिकेटा थोड़ा ना लगता है. नहीं सर, उसमें हमको लिबर्टी दे दें सर, हम फाइल कर. तो लिबर्टी दे रहे हैं ना, लेकिन लिबर्टी टू फाइल एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन हम 7/11 नहीं लिखेंगे. ये तो हमने आपको बता दिया. आपने 30 रुपए कोर्ट फीस लगाई और 3 लाख रुपए की एडवाइस दे दी. लिखिएगा. Chandraj Dubey, Learned Counsel for the petitioner, after arguing for some time, prays for withdrawal of this this miscellaneous petition with liberty to file an appropriate application before the trial court. Accordingly, a petition is dismissed with the aforesaid liberty. 29. Shri Jadid Sirpura. This is against order of remand. I am the plaintiff, my lord. I filed a suit based on title that was decreed by the trial court. Now, before the lower appellate court, my lord, an application is filed under order 41 rule 27, seeking to place on record a sale deed which is executed in the year 1959. That application is allowed and wholesale remand order has been passed. Issue notice to the respondent on payment of PF by registered AD post
within 7 days, returnable within 3 working days, returnable 4 weeks. Next, appellant is aggrieved of order dated 17/11/2022, passed by learned first additional district judge the first additional judge to first additional district judge Betul in RCA 53/2017, whereby learned appellate court has passed a wholesale order of remand without framing any issues. Next, notice we made returnable. आ गया क्या 4 weeks? हाँ, बस. It is submitted that a sale deed of year 1959 is filed by the defendant before the appellate court along with an application under order 41 rule 27 CPC, and on the basis of said document case is remanded without framing any issues. Next, as an interim measure, it is directed that till next date of hearing, proceedings before the trial court shall remain in state list in the week commencing 30 January 2023. Number 30. But by way of this petition, my lord, I'm challenging the order passed by the respondent number 225, my lord, whereby the objection submitted by the petitioner, my lord, against the sustainability of mutation proceeding initiated by the private respondent number 6, my lord, has been rejected, my lord. ये तो interim order हुआ ना? My lord. Interim order के खिलाफ miscellaneous petition लगेगी क्या? My lord, thereafter I preferred a revision, my lord. It was also dismissed, my lord. Therefore, my lord, this petition is. उसको उनको बोल देते हैं finally decide कर दें आपका mutation case जो है. My respect. अरे भाई, यहाँ इस केस को पेंडिंग रखने से क्या लाभ मिलेगा? अल्टीमेटली आपके ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो चुके हैं, मेरिट पे डिसाइड होना है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हुए ना, मेरिट पर दोनों एविडेंस. I am the, my lord, necessary party in the mutation proceeding, my lord, because the mutation proceeding were initiated in respect of the ancestral property, my lord, recorded in the name of my mother, my lord. On the basis of which document mutation is being sought? My lord, on the basis of will, my lord. Will, आपकी माताजी की will है ना? In support of the private respondent number 6, my lord. आपकी माताजी की will है ना? अगर आप उसको चुनौती दीजिए. I have challenged the in civil suit, my lord. तो civil suit से stay है क्या? The civil suit is pending, therefore I. Stay है क्या? No, my lord. They are, my lord, dragging the proceeding. Mr. Counsel, my lord. अगर यहाँ म्यूटेशन हो भी जाता है तो all the rights will be subject to the outcome of the civil suit. या तो सिविल सूट में आप स्टे करा लीजिए. नहीं, अरे भैया आप लोग तो यहाँ पूरा सलाह लेने के लिए आते हैं. In that case, if their name may be mutated, then they may alienate the suit property. Then also you can file an application and order rule 1-2 saying that till the pendency of the suit they may be stopped from alienating the property. They are my respect. High court में 4 लाख केस इसीलिए है कि ये frivolous litigation बहुत है. My respectful submission is this, my lord. I am the necessary party, my lord, in the mutation proceeding. कैसे हो जाएंगे आप? आपकी माताजी ने वसीयत लिखी, आपकी माताजी ने आपके पक्ष में नहीं लिखी. I am disputing that will, my lord. जब तक वो डिक्री नहीं हो जाएगी उस वसीयत को null and void डिक्लेयर करने की, तब तक आपका कोई राइट नहीं है. You want this finding लिखिएगा. अरे आपको जब सही सलाह दे रहे हैं आप मान नहीं रहे. अब आपका ये पिटीशन खारिज कर देते हैं. लिखिएगा. This court, my lord, प्रतीक दुबे, learned counsel. I am taking, my lord, to the order, my lord, passed in the identical, my lord, wherein it has been held that, my lord, that the revenue courts have no jurisdiction, my lord, to consider the case for mutation on the basis of will, my lord. Registered will है आपकी माताजी की. My lord, I am disputing the. You may be disputing it. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रजिस्टर्ड विल है. अगर आप अभी 2022 आपको निकलवा के दूं क्या जजमेंट? अगर रजिस्टर्ड विल है तो प्रिजम्पशन इज इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इन हुज फेवर दैट विल हैज बीन रिकॉर्डेड. My lord, it is right. ठीक है, जब तक वो सेटिस्फाइड होगी तब आपके राइट्स एक्रू होंगे, तब देखा जाएगा. सिर्फ But even, my lord, in my objection, my lord, no reason. You may take n number of objections at different places. Those objections have no sanctity because your mother has left a registered will
in favor of private respondent number 6. You will have to prove that that will is forged. उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है. Then this issue be decided by the civil court, my lord. Till then this proceeding. सिविल कोर्ट के खिलाफ तो आप आए नहीं ना यहाँ पर. I have come सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए. They are dragging the proceeding of Who's dragging the 39, 1 and 2, my lord. The private respondent, they are, my lord, not filing their response to the आप application. उस केस के खिलाफ आइएगा एमपी में, तब सुनेंगे. आज कैसे कर देंगे इस केस That में? case, my lord, if their name is mutated, my lord, then they may, my lord. Then you have a remedy, Mr. Dubey, to file an application before the trial court that their names have been mutated, but they be stopped from alienating the property pending final decision in the civil suit. ठीक है? क्या क्या करना है? मैरिज पे खारिज करना है कि आपको इसको विड्रॉ करना है? Lord, I may be permitted to withdraw, my lord, to. देखिएगा, श्री प्रतीक दुबे, after arguing at length and unable to convince that how revenue authorities can be stopped from acting on a registered will left by the mother of the petitioner in favor of the private respondent only on account of pendency of a civil suit where petitioner has challenged the will, prays for withdrawal of the petition with liberty to pursue his remedy before the civil court. Number of terms petition is dismissed as well. एक मिनट रुकिएगा प्लीज. ठीक है. सुनिए, ये there is a notice for reference, तो ये इसको बोर्ड पे चला दीजिए. ये जितने ये जो मेंशन केसेस हैं ये 2:15 बजे लेंगे पहले. ठीक है? हाँ. आइटम नंबर 21 क्या हो गया 21 को? इसको डिस्कस करेंगे. तो मैरिज पे किया होगा ना, लेटर ऑन करके इनका नाम डाल दीजिएगा. 21 में लेटर ऑन she appears and prays for marking his presence. चलिए 31 उसको बोर्ड पे डिस्प्ले कर दीजिए. मेंशन केसेस विल बी टेकन अप एट 2:50. But widening of road matters and flyovers matters are probably going to division bench. You know, that is subject to my. वैल्यूएशन के ऊपर है. नहीं, widening. This is not a contract matter. अच्छा, आपका क्या इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन ये हम लोग की इनका कहना है कि लैंड एक्वायर करें. नहीं, ये बोल रहे हैं डिवीजन बेंच में जाएगा. ये हमारे सामने नहीं कि बहस करना ऐसा चाहते. नहीं कर रहा. तो आपका क्या कहना है? आप भी इस बात को एग्री करते हैं? नहीं सर, हम तो बिल्कुल एग्री करते हैं, कोई इशू नहीं. लिखिएगा. Anshuman Singh, learned counsel for the petitioner, submits that this matter is to be listed before honorable division bench. Office to examine and do the needful. Both of us are facing each other in those matters. We will not talk to. इनका भी नाम डाल दीजिएगा. You are appearing as additional advocate general or for municipal corporation? एज एडिशनल For 1 to 4. municipal corporation के लिए नहीं appear हो रहे? नहीं, वो अभी नोटिस नहीं, कॉपी नहीं देते ना आजकल. अरे ऐसा मत बोलिए. कॉपी दे डोंट गिव एडवांस कॉपी. ब्रो, आजकल वो प्रोविजन बंद कर दिया ना. नहीं, प्रोविजन बंद कर दिया, पर फिर भी हम लोग तो दिया होगा, लेकिन हमको चलिए ठीक है. ग्रेटफुल. लिस्ट नेक्स्ट वीक. 32 legal partner side. My lord, by the way of this writ petition, my lord, not challenging any special order, my lord. My lord, respondent are not taking any action against the accused person, my lord. Annexure P1 is the FIR which is registered by the petitioner, my lord, under section 307 and 25-27 of Arms Act, my lord. Dated, आपका रिलीफ क्लॉज पर आइए प्लीज. my lord. क्या रिलीफ चाहा है? My lord, my relief is that my lord, honorable court may kindly to direct respondent number 4 to take immediate step on the pending complaint on 17/6/22, my lord. प्रोटेक्शन टू द पिटिशनर किस बात का? My lord, they are threatening to the petitioner, my lord, कि आप राजीनामा कर लें. My lord, कौन है रिस्पोंडेंट नंबर 5? SHO है. my lord, respondent number 5 is station house officer. इसमें इंस्ट्रक्शंस लीजिए. लिखिएगा. पिटिशनर हैज मेड सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 5. पिटिशनर हैज लॉन्च्ड FIR registering case crime number 283 of 2022 under at police station Damoh, at police station Hata, district Damoh,
under section 307 IPC and 25,27 of Arms Act 1959. Next, it submitted that respondent number 5 is threatening the petitioner to enter into a Respondent compromise. number 5 is not threatening, my lord. Then who is threatening? Accused are threatening. Accused family is Paragraph- फिर threatening. आपने ये एक सेकंड पढ़िए या पार्टी तो भी नहीं बनाया हम गलत समझ रहे हैं. Well- To direct the respondent number 4 to provide police protection to the petitioner and his family and take disciplinary action against. Disciplinary action क्यों लेंगे? Well- इसकी प्लीडिंग है नहीं सर, अगर आप पैराग्राफ Well, ई my में lord, देखेंगे may I clear, my lord? जी जो टीआई महोदय हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी करें. वो फ्रीली घूम रहा है सर गांव में, और हमें जो है वो उसकी फैमिली धमका रही है कि आप राजीनामा कर लो. इसलिए सर पढ़िएगा, शुरू से पढ़िएगा, ऊपर से पढ़िएगा. रिस्पोंडेंट नंबर 5 चाहिए जी. नहीं, ऐसा नहीं होता. नहीं, ऐसा सब काट दीजिए. इसमें लिखिएगा दिस पिटीशन इज फाइल्ड. कब हुई थी एफआईआर दर्ज? My lord, FIR registered on 17/6/22, my lord. इसमें इंस्ट्रक्शंस लीजिए. 2:15 बजे बताइए क्या हुआ. फाइनल रिपोर्ट फाइल हुई कि नहीं हुई? 2:15 बजे मत लिखिए. Third round of litigation. The respondent number 4 has again absconded for the second time. First round of litigation, my lord, I came to the High Court and I prayed that my 138 case may be decided expeditiously. Lordships were gracious. He suffered a conviction. After conviction, my lord, he from Sessions Court, he secured bail on the condition that he'll deposit 20% within 90 days. That did not happen. And an MJCR was issued by the JMFC. On 7 Tarikh, page number 12, my lord, arrest warrant was issued. And my lord, yesterday, as per yesterday, my lord, he was roaming in the district court. And my lord, we went to the police authorities to enable them to arrest this person. And my lords, they did not pay any heed. And my lords, I was also compelled to file this. Ji. Yesterday he was wrong. But yesterday, this is this is. कमेंट कर लीजिए पिटीशन. नहीं, प्लीडिंग के बगैर कैसे सुनेंगे? But then lordships must not consider that particular argument. But for the last 8-9 days, my lords. Which provision of law this High Court should direct? आपका एक 138 का केस चल रहा है जी जेएमएफसी के नहीं पास. कन्विक्शन हो गया है. कन्विक्शन हो गया है जी. और सेशंस कोर्ट ने कहा है कि 90 डेज के अंदर 20% डिपॉजिट कीजिए, अन्यथा बिल कैंसिल कर दी जाएगी. तो कैंसिल हो जाएगी. तो उसका यस, एंड आफ्टर दैट बिल कैंसिल हो गई क्या? जी 90 डेज का पीरियड कब खत्म हो? चलिए सेशंस कोर्ट का ऑर्डर बताइए. जी मैडम, पेज नंबर 32 पे आ जाए. 32 पे बताइए क्या कहा है. लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आता है अपील की प्रकृति. का ऑर्डर है ये है 6/9/2022 का. हाँ मालूम. जैसे this says in light of सुरेंद्र सिंह देशवाल, this says मालूम that it still stand cancel. अतः अपील की प्रकृति दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 389 स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिकर राशि इतने की 20% राशि विचारण न्यायालय में 90 दिवस के अंदर जमा करें एवं अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20,000 रुपए इस सेक्शन प्रतिभूति. तर्क में क्या हुआ अपील में? My lords, I am attending all the cases. My lords, the other side went to the High Court, again suffered dismissal. My lord, this order was challenged before the High Court, and while order dated 14. अपील में क्या हुआ? मतलब जैसे कि अपीलेट कोर्ट का ही ऑर्डर है. अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर है. अपीलेट कोर्ट में फाइनली उसको क्यों नहीं सुन रहा अपील को? मतलब that इसलिए नहीं सुन रहे कि because now again my lords, I don't want to make this statement but because lords have put a straight query to me, but they say that अभी we are overloaded with work. मैं लिख देता हूँ उसमें वो 1 महीने के अंदर सुन के उसको डिसाइड. नहीं बट सर वो अरेस्ट फिर भी नहीं हो रहा ना सर. आपको अरेस्ट से मतलब है, आपको अपील की सुनवाई से मतलब है? नहीं सर. अगर उसकी अपील खारिज हो जाएगी जी. तो वैसे ही उसको दे विल बी ड्यूटी बाउंड टू अरेस्ट हिम. यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जी फॉर योर ओन benefit, to create a pressure. You want this observation from the court that you are not interested in proceeding with the case on its own. Let all order sheets be called by the. No, I'm not going to call anything. जी. If you have come before this court, you should have filed all the order sheets on which you want. My lords, I am here for execution of the arrest warrant itself. No. High Court is not the executing authority. Sorry. There is a provision provided under CRPC that how arrest warrant is to be executed. Sorry. My lords, that has been issued after this order, my lords. My lords, may kindly look at application कौन सी लगाई थी? चलिए. जी my lord. Arrest warrant को execute कराने के लिए आपकी application कौन सी है? सर अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है. मैंने मेरे को एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ी. MJCR और सुमोटो कोर्ट लेता है सर. उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसके लिए आपने क्या किया?
कि उनका क्या पता बताया? My lord, इसमें जो उसका उसका एक ही एड्रेस चला रहा एक्शन भी नहीं है पुलिस अथॉरिटीज के खिलाफ कि डेलिबरेटली दे आर नॉट, सॉरी कुछ नहीं है, लिखिएगा. है. Then my lord, directly sessions court, my Can be lord. disposed of Then my lord, with the direction to the learned 19th है. ये है कोर्ट ऑफ सुरेश कुमार सूर्यवंशी 15वें अपर सत्र न्यायाधीश Fifth additional session judge 15 में लिखा 15th additional session judge Sri Suresh Kumar Suryavanshi to hear and decide appeal 35249. यही नंबर है? नहीं सर, 415 है. हैं? 415/2022. नहीं, हाँ सर, क्रिमिनल अपील 415/22, पेज नंबर 30 पे. 415/22 within 30 days without affording any opportunity to without affording any undue adjournment to the appellant, in as much as it is apparent from order dated 6/9/2022 that case was fixed for final argument on 11/10/2022, but appeal is not heard and decided, as a result of which accused oblique appellant is emboldened and is not being arrested by the police authorities. Next para. Let copy of order 30 days from the date of receipt of certified copy of the order being passed today. This court has not expressed any opinion on the merits of the case. So challenge is to the annexure P1, my lord. That is the order passed by the collector, my lord. And the consequential order, that is annexure P4, my lord, that is passed by subdivision. बताइए. Lord, the P1 FIR दर्ज करने का. P1 में kindly be seen, lord. हाँ बताइए. This is with regard to the irregularities in the inquiry which has been conducted and found, my lord, without ex parte inquiry was conducted, and the collector, my lord, who is the appellate authority under the control order, passes an order directing the subdivisional officer, if your lordship would see the last para, my lord, that अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर नियत समयावधि में प्रकरण का निराकरण विधि सम्मत किया जाकर दुकान पर कम पाई गई खाद्य सामग्री स्टेट सिविल सप्लाईज को निर्धारित मूल्य के आधार पर वसूली की कार्रवाई की जाकर इस कार्यालय को नियत अवधि में अवगत करें. My submission is not that there is no scope left for the SDO to adjudicate anything. He has, on the basis of inquiry, held that there is a misappropriation. So you challenge the order of the collector in appeal before the divisional commissioner. There is no provision. Under the control order, it is the. I know that under the control order, orders of the district supply officer and SDO are appealable before the collector. Yes. But now if collector has exceeded his authority, this is your allegation. Yes. That collector has exceeded your his authority and has issued directions to the subdivisional officer to make recovery, then you will have to challenge this order. I am challenging before your lordships because there is no remedy of appeal. Therefore, I am before your lordships. Issue notice to the respondents that to show cause as to under which authority collector. कहाँ के हैं ये? This is Tikamgarh has passed impugned order annexure P1 directing the subdivisional officer to make recovery, thus taking away the discretion vested in the subdivisional officer under the provisions of Madhya Pradesh Civil Supplies Control Order 2015. I am seeking the stay of the order also. ये तो एग्जीक्यूट भी हो गया एसडीओ ने. एग्जीक्यूट नहीं तभी तो कर दिया 6/12 को कर दिया. नहीं फाइनल ऑर्डर है पर हमसे वसूली नहीं हुई. हाँ ठीक है मत होने रुक जाइए. नहीं एटलीस्ट दिस मच में प्रोटेक्शन में भी देने वाला दर. अरे रुक जाइए उसको देखने दीजिए. वहां पर काम सर उसमें दो चीजें हैं. आप देखें मेरा निवेदन सुने. उसमें आप देखेंगे अगर उसका ऑर्डर एसडीओ का ऑर्डर तो उसने इसी बेसिस पे कि भाई आप उसको ये जो है आने दीजिए ना. हम समझ तो लें इसको कि कलेक्टर ने किस प्रावधान में किया है. लेट अस हियर हिम. Till such time, Lord, because there are two things he has done. Lord. अगर रिकवरी इलीगल होगी you will get each and every penny back. सर दो चीजें हैं. रिकवरी भी डायरेक्ट करी और साथ में शॉप भी सस्पेंड कर दी. हाँ ठीक है उसको सुनेंगे ना. उनको सुनने तो दे पहले किस पावर में किया समझ तो ले. चलिए नेक्स्ट
The issue involved in this case is the abuse of process of law by respondent number 4. He filed a private complaint, annexure P1, in which he has alleged that his guru has been defamed. His guru is? I beg pardon? आपने क्या बोला? Private complaint file की? Private complaint file. हाँ. Private complaint file की? Yes, sir. And in private complaint, he has alleged in para 7 at page 14. Page 14 that his Dharam Guru Chetna Purush Paramhans Yogi Raj, para 7, अभियुक्तों ने एक राय होकर अभियोगी के धर्म गुरु युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के खिलाफ दैनिक हरिभूमि के शेड्यूल भूमि के अंक में प्रथम पृष्ठ के अंतिम पैरा में 4 अप्रैल 2005 सोमवार को शेड्यूल जिले में ही युग चेतना पुरुष नामक शीर्षक से समाचार छापा। इस समाचार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अभियोगी के धर्म गुरु युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज लगाया है तो प्राइवेट कंप्लेंट है। प्राइवेट कंप्लेंट अगर कॉग्निजेंस ली जाएगी अभी तो जो है आपको चांस मिलेगा उनको क्रॉस एग्जामिन करने का, समझ जारी होंगे। The law says that the person who has been defamed is the person who can come before the court, not cognizance हो गई क्या? हाँ, cognizance हो गई तो आप जाकर वहां बताइएगा। मतलब here we are here on the point that it coming to high court at the drop of the hat is you have a remedy there. No, it is abuse अच्छा, of वैसे भी अगर cognizance दिया तो it's a revisable order, उसके खिलाफ revision लाई करेगी। Since it is an abuse of process of law, then also you can bring it to the notice of the court in revision that the trial court has issued process without applying the mind. नहीं the रिवीजन का प्रावधान हटवा दीजिए, सीआरपीसी अमेंड करवा दीजिए। जब प्रावधान है at the same time, what has happened? He has compromised with the other accused persons, and the compromise order has been passed, and other co-accused. And what is your locus? What is your status? Who are you? I'm editor of that. I was at that particular point of time. I was editor of the newspaper which was being published, schedule edition. ठीक, तो उस टाइम हम वहाँ थे। The editor, so far as editor is concerned, he is पार्टी बनाया है क्या? I beg pardon? एडिटर को पार्टी बनाया है ना, ठीक है। हाँ, एडिटर को आप जाके बताइए कि जिसकी अवमानना हुई है वही लगा सकता है। हाँ, वही लगा सकता है। हाँ, उसका चेहरा नहीं लगा सकता, ऐसा जाके बताइएगा वहां पर रिवीजन में। यहाँ नहीं। मतलब so far as the Mr. Jabalpur Singh, मतलब we have a look to the judgments which have been passed. हाँ, which बताइए। says that the editor is editor has got nothing to do with the तो पेपर को भी तो बनाया पार्टी इन्होंने, प्रकाशक मुद्रक को भी बनाया, साथ में एडिटर को भी बनाया। उन लोगों से सबसे कंपाउंड कर लिया, केस खत्म कर दिया। कहाँ लिखा है ये annexure P4 at page 2021. क्या लिखा उसमें? The order sheet dated 7/12/2015. परिवादी सहित अधिवक्ता सच एंड सच, आरोपी आनंद सहित सच एंड सच प्रकरण। परिवादी ब्रिजपाल सिंह ने, दैट इज द कंप्लेनेंट ने, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह प्रकरण में और कोई साक्ष्य नहीं देना चाहते। परिवादी ने न्यायालय के समक्ष यह व्यक्त किया है कि उसका आरोपी आनंद शर्मा से राजीनामा हो गया तथा वह अपने पक्ष समर्थन में किसी साक्षी को कथन नहीं कराना चाहता, अतः प्रकरण में साक्ष्य समाप्त घोषित किया जावे। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकरण में आरोपी आनंद सचिन सच का भारतीय दंड के धारा 327 के संबंध में विचारण जारी है तथा प्रकरण आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत है तथा परिवादी अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत। प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना अतः प्रकरण में आरोप पूर्व साक्ष्य समाप्त घोषित किया। एंड देन ऑन 16/12 द ऑर्डर हैज बीन पास्ड एट पेज 22। फिर आज आप 7 साल बाद क्यों आए हैं? We were under the information that the entire case has been compounded. 7 साल बाद क्यों आए हैं आप यहाँ पर? रिवीजन लगाइए वकील साहब। You cannot circumvent the limitation of filing
revision by filing a writ petition. Sorry, at least this court understands the design. मतलब Limitation आप वहां जाके convolution की application लगाइएगा, लिखिएगा. This application is filed. my lord, may have a This petition the is judgment filed. passed by the apex court दे so दीजिए, far as दीजिए. that if there is an abuse of process of law, हाँ बताइए ना, the same बताइए क्या abuse है, बताइएगा. 2021 volume दीजिए, किताब दीजिए ना, SCC किताब दीजिए, पैराग्राफ बताइए. Right. कहाँ है abuse? para 44 पैरा 44 पढ़िए. देखिएगा. This petition is filed by the. there is another judgment also my lord. एक बार में दे दीजिए फिर. जी. एक बार में दे दीजिए. जो जिन पे रिलायंस कर रहे हैं एक बार में दे दीजिए. para 8 of this same. And और कुछ है? yes, दे दीजिए. this is a Kerala High Court's judgment where in similar circumstances the last I'll just read this. At page 12, my lord has page 12. It is stated that the first accused, Memam Matthew, who is the editor of Malayalam Manorama, is responsible for selection of news under PRB Act. If his responsibility is only in the matter of selection of news, then he cannot be said to have committed offense of defamation under section 499 IPC, as per which the making or publication of the imputation alone will constitute the offense. Selection of the news item cannot amount to making of the news which is already made and kept available for selection. Similarly, selection of news cannot amount to publication of the news as well. In annexure R1D, it is printed in the unequivocal terms that the daily is printed and published by one Jacob Matthew, who is not made an accused in the case. Thus, even going by averments in the complaint, the editor is not responsible either for making or publication of the news. If only the first accused has a role in the making or publication of the news item can be prosecuted for the offense. Hence, even if the complaint as well as the offending news item could constitute an imputation made with the intention of harming the reputation of the complainant, such complaint would not be maintainable against the person like the first accused who had no role either in making or publication of the imputation. ये 13/8/2013 को ये MCRC किसने फाइल की थी? ये we had filed this. तो फिर सेकंड MCRC मेंटेनेबल है? एक और इशू बता दीजिए जिसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट लाए. But once an MCRC is dismissed for want of prosecution, and without seeking restoration of that application, you can file a separate proceedings. ये इसके ऊपर भी बता दीजिए on the same subject matter. अरे लॉ बताइए ना आप तो. We are not filing a second MCRC. You may this is. आप इसको जजमेंट दिया. It is you can file a petition under 482 or 226. Can those two parallel proceedings can be taken up simultaneously or in parallel? Because once your MCRC was dismissed for want of prosecution, yes, it was no order on merit. So it is not the question of res judicata. It's a question of propriety. Right. You had a remedy of seeking restoration of that MCRC if it was dismissed for want of prosecution. Well, we felt that since the you felt your feelings will decide the what law should what course law should take. मैं उस पॉइंट पर नहीं aware मैं. नहीं, हम तो उस पॉइंट पर है ना. मैं ये बता दूं कि जो कंपाउंडिंग की थी तो वो इसी आधार पे वो हमें उससे कंपाउंडिंग से आई एम नॉट कंसर्न. कंपाउंडिंग के ऊपर पहली चीज कोई ऑर्डर नहीं है.
दूसरी चीज, नहीं, वो आपकी trial court अगर ने एक compounding कर एक दिया। पिटीशन खारिज हो गई तो उसके बाद में कॉग्निजेंस लेने के पहले तो कंपाउंडिंग होती ही नहीं है। पहली चीज, कंपाउंडिंग का प्रावधान आता ही पिक्चर में जब है जब कॉग्निजेंस ले ली जाए। कॉग्निजेंस ले लिया तो फिर उसके बाद कहाँ है वो कॉग्निजेंस, किस तारीख का है? Yes, this is annexure P2 at page 18. That पेज is 18। yes, Lord. On हाँ। 8/6/2005, the cognizance was हाँ। done. And the compounding was done on 16/12/2015. 16/12 नहीं है, 7/12 की ऑर्डर शीट है। 16/12 के लिए तो किसको तर्क के लिए, आरोप तर्क के लिए अब पर वो ऑर्डर जो कंपाउंडिंग का किया वो कंपाउंडिंग ऐसे नहीं होता है। 16/12/2015 इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि उनको जो है उन्मुक्त किया जाता है। कंपाउंडिंग के ऑर्डर में लिखा जाता कि जो है आनंद शर्मा को उन्मुक्त किया जाता है। He has only mentioned that he has entered into a compromise, but there is no order of discharge of Anand Sharma because नहीं, अरे भाई जब तर्क पे लगा हुआ, आरोप तर्क पे लगा हुआ है, उसके पहले अतः आरोपी आनंद शर्मा तथा तनय अंबिका प्रसाद शर्मा को के आरोप से उन्मोचित किया जाता। कहाँ लिखा है ये? पेज 22। It was fixed on for 16 के लिए, उसको वो कर दिया। हाँ, तो डिले का बता दीजिए आप। 2015 के बाद आप 7 साल बाद आ सकते हैं। We were under the impression that it has been compounded for all the accused. Your impression is not sufficient. Yes. But आप फरार थे, आप फरार थे। That is why we आपने कब सरेंडर किया कोर्ट में, ये बताइए? Because revision will be maintainable only when you surrender before the court. This device of approaching a court in a dubious manner without to circumvent the legal provisions, because court has already declared you to be absconding. You had a remedy of filing revision against that order. You did not file revision. You have come here in writ petition. Earlier 482 petition was dismissed as for want of prosecution. Yes. चलिए ठीक है। We are here only for because it is an abuse of process. हाँ ठीक है, लिखा देते हैं, लिखिएगा। Shri Ajay Pal Singh, learned counsel for the petitioner. This petition under Article 226 of the Constitution of India is filed seeking issuance of writ of certiorari, quashing the complaint of respondent number 4 and proceedings in criminal case number 2389/2011 pending before the trial court. Full stop. Next paragraph. It is apparent from the documents available on record that petitioner is approaching this court being aggrieved of order dated 16/12/2015, which he has cleverly omitted to mention in the relief clause. Full stop. No, we are not Firstly, telling after 7 years, how petition is maintainable is the issue. Second issue is that admittedly petitioner had filed MCRC 13440 of 2009 and as is evident from annexure P3, wherein wide order dated 13/8/2013 application was dismissed for want of prosecution. Full stop. Petitioner's counsel admits that this MCRC was filed seeking quashing of the complaint. Next, petitioner had a remedy of seeking restoration of said MCRC allegedly filed under section 482. Apparently filed under section 482 CRPC, but instead of seeking restoration of said MCRC, petitioner has now approached this High Court saying that proceedings in the criminal case be quashed. Full stop. Next para. Perusal of order dated 16/12/2015 reveals that trial court has recorded a finding that the accused Bhaskar Rao Rokde is absconding. Therefore, on the order sheet, a note be made with red ink that
accused Bhaskar Rao Rokde is absconding and therefore record be not destroyed. Full stop. In view of said facts, trial has yet not commenced qua present petitioner Bhaskar Rao Rokde. Next. Though learned counsel for the petitioner has placed reliance on the judgment of Supreme Court in Arnab Manoranjan Goswami versus State of Maharashtra and others 2021 to SCC 427 to submit that and placing reliance on para 44 of the said judgment that once an FIR is registered, the accused persons can always approach the High Court under Section 482 CRPC or under Article 226 of the Constitution for quashing of the FIR, which is based on the earlier pronouncement of Supreme Court in the state of Telangana versus Habib Abdullah Jilani 2017 bracket में 2 SCC 779 bracket close another bracket para 11. But fact of the matter is that there is no provision to draw two proceedings one after another, that is one under section 482 and thereafter under section 2 article 226 as is the case in present. Full stop. Next one. Similarly, reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Kapil Agrawal and others versus Sanjay Sharma and others decided on March 1st, 2021 in criminal appeal number 140 of 2021, wherein para 8 at page 80. in para 8 it is held that as under within inverted commas we are not expressing anything on merits whether comma any case is made out against the appellants for the offences alleged in 156 within bracket 3 bracket close CRPC application as the same is pending before the learned magistrate and the learned magistrate is to take call on the same. Full stop. Therefore, comma, when the impugned FIR is nothing but an abuse of process of law and to harass the appellants accused, comma, we are of the opinion that the High Court ought to have exercised the powers under Article 226 of the Constitution of India oblique 482 CRPC and ought to have quashed the impugned FIR to secure the ends of justice. Full stop, inverted commas close. Next para. Reliance is also placed on the judgment of High Court of Kerala at Ernakulam in criminal MC number 1481 of 2006, Maiman Matthew versus M.N. Radhakrishnan and others, wherein on internal page 12 of the judgment, learned counsel for the in ten learned counsel has read as under. ये निशान लगा दिए, इसको कोट कर दीजिएगा पेज 12. Next, after hearing Shri Rohit Jain submits that petitioner has a remedy
of filing a revision against the impugned order. This once petitioner failed and his application under section 482 was dismissed by the order annexure P3, then he had a remedy to seek restoration of said MCRC rather than filing this petition under Article 226. None of the judgments of Supreme Court, either in Kapil Agrawal and others or Manoranjan ऊपर लिखा Supra, provides for taking up remedies under section 482 CRPC and 226 one after another. Full stop. Next prayer. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, judgment of Kerala High Court is not applicable on its own facts in as much as case was fixed before the learned GMFC for framing of charge. Accused petitioner absconded. Therefore, facts of the case being not available in full, it cannot be said that what was the role of the petitioner as an editor in Haribhumi newspaper against whom defamation proceedings have been drawn. Next, as far as judgment in Kapil Agrawal and Arnab Manoranjan Goswami are concerned, they do not provide for drawing parallel, simultaneous or sequential invocation of remedy under section 482/226 full stop. 482 CRPC and Article 226 of the Constitution of India. Full stop. And in view of the fact that petitioner has an alternative statutory remedy of filing a revision against the impugned order, petition is not maintainable and is dismissed. It is made clear that in case petitioner chooses to avail remedy of revision, then dismissal of this petition or any observation made herein under will not come in the way of the petitioner. रख लीजिएगा इसको, किताब वापस कर लीजिएगा. My submission that after arguments are over, no submission. My submission may be observed so far that respondent number 4, he is only chela of his guru. वो सब आप रिवीजन में बताइएगा. चलिए. 36. My lord, in this case, we have challenged the notice issued by the Commissioner, Nagar Nigam under section 310. उसकी अपील होती है 403 में. इसमें मेरा सबमिशन ये है, my lord. सबमिशन से अपील का प्रोविजन खत्म हो जाएगा तो बताइए. My lord, only within 24 hours. Whatever it is, you file appeal. There is a statutory provision of appeal, and वैसे भी show cause notice के against writ petition is not maintainable. It is notice, in fact, my lord, it is ordered to remove. इसकी अपील होती है. ठीक है, my lord. लिखिएगा. श्री भगवान सिंह ठाकुर, after arguing for some time, prays for withdrawal of this petition to avail alternative statutory remedy of filing appeal against the notice issued by the Municipal Corporation under section 310 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956. With the aforesaid liberty, petition is dismissed as withdrawn. Some protection may be given. नहीं, वो सब वहीं पर. This is my representation is pending. किस चीज का representation है? My vehicle was seized earlier. Thereafter, also a notification. क्या remedy है आपके पास? नहीं, उस पे नहीं है केस, my lord. Thereafter, also the notification has been issued by the state government, giving the discount of 10 years old vehicles. For that purpose, I move an application for release of vehicle. Notification retrospectively applicable है क्या? जी, अभी फिर से वो continue आ गया हमारा. हाँ, वो पढ़िएगा. P4 page 12 में extend हो गया. Earlier था 2019 में. क्या है P4? ये P4 में एक बार आ गया है. 30 सितंबर 22 का. क्या आ गया? My lord, में see page number 14. The petitioner's contention is that white notification dated 30 September 2022, some relaxation in payment of tax
motor vehicle tax has been granted by the state. Petitioner has made a representation to the authorities, that is RTO Hoshangabad, to consider said notification and decide his representation. This innocuous prayer is not opposed by Shri Shiv Kumar Srivastav, learned government advocate. Accordingly, this petition is disposed of with a direction to the RTO Hoshangabad that it will examine whether notification dated 30 September 2022 is applicable retrospectively, because petitioner is aggrieved of seizure of his bus prior to issuance of this notification, and if this notification is applicable retrospectively, then decide the representation on its own merits, keeping this aspect of retrospectivity in mind and recording a specific finding in this behalf. This court has not expressed any opinion on the merits. If petitioner approaches within 15 days, further 60 days कर दीजिएगा. चलिए. This matter pertains to model condition. My lord's order is page number 31. क्या मॉडल कंडीशन? 15 years my lord. वो वहां नहीं जाता, एसटीटी में नहीं जाएगा ये. My lord, STT में तो अपील परमिट चैलेंज होते हैं, अपील और रिवीजन में. 31 में आपका 31 का ऑर्डर कर दीजिएगा. पेज 31. हाँ, डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा. We can. Number 40. जी. My lord, the petition challenging in answer P12, my lord, which is the order passed by the Tehsildar, by which on the land of the petitioners, my lord, a new map was marked and demarcated. इसकी तो अपील होती है भाई. एक अपील तो प्रोवाइडेड है नक्शा तरमीम के खिलाफ, और 2013 का आदेश है ये. मतलब revision also decided by the revenue board, my lord. कब डिसाइड हुई? It was decided on 10/9/2018, my lord. फिर 4 साल से क्या कर रहे थे आप? This petition filed in the year 2019, my lord. क्या हुआ? 2019 की फाइल है ये. Yes, my lord. Within a period, my lord. क्या ऑर्डर है? Order, my lord, in Exer P12 at page number 30, my lord. पढ़िए. So by this order, my lord, on the lands of the petitioner, my lord, a new map was marked by this Tehsildar and demarcated in favor of the respondent number 5. आपने रिप्लाई फाइल किया नहीं किया अभी तक? अभी नोटिस ही नहीं हुआ था. Issue notice. Notice is waived by Shri Vijay Kumar Shukla. Let reply be filed as to under which provision of law Naksha Tarmeem was carried out by the Tehsildar in 2013 without affording opportunity of hearing to the petitioner. List in the week commencing 16 January 2023. 41. This, my lord, my land was, my lord, acquired for construction of canal. I have two objections, my lord. First, the route of the canal was changed against the notification, my lord, notified map. And the second was that, my lord, I was entitled to be compensated under the new Act of 2013, but that has been awarded under the earlier Act of 1894. Notification कब का है? Notification Annexure A1 है 2013, December 2013 का है. एक्ट कब से लागू हुआ? ये है इन्होंने इसको पेश किया. वही अवार्ड है ये. दिसंबर 2013 का अवार्ड है. हाँ सॉरी, अवार्ड है. नोटिफिकेशन जो है वो 6/3/12 का है. 12 का है. ठीक है जी. और इसमें देख लें इम्प्यून ऑर्डर. अगर आप इस अवार्ड से असंतुष्ट हैं, आपको इसके खिलाफ रिवीजन लगेगी. इन्होंने रेफरेंस में जाना पड़ेगा. इसको देख लें इम्प्यून ऑर्डर को. हाँ. और इसमें एक्ट 2013 जो है वो 1 जनवरी 2014 से एग्जिस्टेंस में है. P6 देख लें कलेक्टर का ऑर्डर. P6 पढ़ लें. पेज 22.
इसमें फर्स्ट पेज पर लास्ट 5 लाइन्स में अधिग्रहण में जहां से नहर निर्माण नक्शा तैयार हुआ वह नक्शा अधिकृत किया, वहां से नहर निर्माण न कर प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 186 के अन्य जगह से नहर बनाई जा रही है जो रकबा अधिग्रहण नहीं किया गया है। वास्तव में प्रार्थी का अधिग्रहित रकबा शासन के नाम दर्ज हो गया और इसी नंबर में से जब खेत के बीच नहर बनाई जाएगी तो प्रार्थी का दोगुना रकबा शासन के पास चला जाएगा। मुआवजा एक ही का दिया गया है। ये ग्रीवांस थी कि चेंज ये रूट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज देख ले, पेज 23। इसकी तो हमें जो जितना हमें आता है इसका तो रेफरेंस फाइल होगा ना। इसमें जो रेफरेंस यही कहता है, सेक्शन 18 था पुराने 18 तो यही कहता है ना। इसमें इन्होंने जो डिसाइड किया है ये सेक्शन 33 2013 के इसमें डिसाइड कर लिया। बस 5 मिनट लूंगा मैं, 5 मिनट बस। आराम से पेज 23 देख लें। पेज 23 6वीं लाइन है, आपत्ति के आधार विशेषज्ञ समिति के बिना रिपोर्ट के मूल्यांकन हुआ, अभी कब्जा आवेदक का है। ये इसके बाद से उन्होंने इसमें और ऐड कर दिया, आज दिनांक 14/10/15 तक ये जो लैंड था इन्होंने एक्वायर नहीं किया। इन्हीं के हिसाब से देखें तो 14/10/15 कहाँ पढ़ रहे हैं? सॉरी मैं मिस कर गया। पेज 23। हाँ पेज 23। इसकी जो 1 2 3 4 5 6 8 लाइन में 8 लाइन अभी कब्जा आवेदक का। ये तो आपके कंटेंशन लिख रहे हैं ये। यस, ये उनका फाइंडिंग नहीं है। आगे देख ले, इसमें फाइंडिंग भी है। फाइंडिंग पेज 24 फर्स्ट पैरा की ऊपर से नीचे से 3rd लाइन, आवेदक की मां के फौत होने से पटवारी अभिलेख आवेदक का नाम दर्ज होने से आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी मां के नाम का मुआवजा राशि का चेक आवेदक के नाम किया जाकर उसे दिनांक 2/7/15 को जारी किया गया है। ठीक, 2/7/15 को इन्होंने जारी किया। तब तक ये नया एक्ट जो है ये इन्फोर्स हो गया। डेट मटेरियल इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए 3/14 को नहीं, ऊपर से पढ़े देखिए, सिलेक्टिव रीडिंग। भूमि का अर्जन करने के बाद आवेदक की मां को चेक इतना इतना जारी किया गया आवेदक की मां के फौत होने से। ठीक है, तो ये 23/3/14 के पहले नया एक्ट इन्फोर्स में आ गया। उसमें भी लिमिटेशन थी कि 6 महीने में अगर नहीं हुआ है तब जो है लागू होगा। मुआवजा नहीं दिया है, जमीन आपकी पहले ही अधिग्रहित हो गई। अगर आपको कोई रेमेडी है तो यू शुड हैव। ये रिव्यू का तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम वो नहीं था, अर्थ नहीं था पुनरावलोकन का, पुनरीक्षण का। और इसके बाद से इन्होंने जो रूट चेंज किया है इसको सिर्फ ये कह दिया कि इट इज सिंपल ए टेक्निकल चेंज। हमारा डबल लैंड चला गया तो आप बाकी लैंड के लिए मुआवजा मांग सकते हैं और ये जो नहीं होगा उसके लिए आपको जो है रेफरेंस में जाना पड़ेगा। My lord, compensation has already been accepted by the objection। Yes, इस पे लास्ट बस देखें, सेक्शन 25 पेज नंबर 25 लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 2 लाइन्स, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 33 भू अर्जन अधिनियम 2013 स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया। तो ये रिजेक्ट तो कर रहे हैं नए एक्ट से। और कलेक्टर साहब को इतना, उनके पास आपके जैसे योग्य वकील नहीं होंगे, लेकिन इशू ये है कि इसकी रेफरेंस बहुत गरीब लोग हैं, सब लैंड भी चला गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, गरीब लोगों को पैसा मिल गया उस वक्त के हिसाब से 5 लाख रुपए मिल गया। बहुत कम मिला। तो उसका रेफरेंस होता है, हम आपको मना थोड़ा ना कर रहे हैं ना, हमें आपकी गरीबी पे एतराज है ना आपको ज्यादा मुआवजा मिलने में हमें कोई वो है एतराज है। हम ये चाहते हैं उसके लिए जो अथॉरिटी है वहां जाइएगा आप। कर दे, मैं शॉर्ट डिस्कस कर दे मतलब लिखिएगा, पिटिशनर काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेज फॉर विथड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन विद लिबर्टी टू फाइल रेफरेंस एज reference petition before the competent authority under the earlier act. Under the act of 1894. In accordance with law. आज रेफरेंस आ गया है, सुन लीजिए आप मेरी बात। अभी नोटिस आया है, there is a reference at 3:30। ठीक है, देखते हैं, टेक अ चांस। Lordship, they have filed the application for the vacating station. Lordship, actually we have not received any copy. We have not received, Lordship. And Lordship, at the same time, Dr. This time we granted to file the reply for the same. देखिएगा, श्री आपका शुभ नाम? सुधीर शर्मा, Lordship. सुधीर शर्मा, praise for time to file reply to the
vacating stay application filed by Shri Vaibhav Jain. On his request, 7 days time is granted to file reply list in the week commencing 9 January 2023. Oh, like that. Number 44 connected. Manan, there are bunch of cases. Manan, but take WP 5957. If the written is there, then Issue क्या है? issue is lots of powers of the Regional Transport Authority has been challenged. This petition was heard on 7th of April 2022 by the Court-9 bench. Thereafter, it has been released on 111 for rehearing. Lots of only order sheet dated 31/3/2022. कब रिजर्व हुई थी ये उसके बाद 7 अप्रैल को 31 मार्च को मॉडिफिकेशन हुआ था। उसके बाद फिर ये 7 अप्रैल को हर्ड होके 1/11 को रिलीज हो गई फॉर हियरिंग। उसी में क्या है? नहीं आगे आज क्या जल्दी है इसको? ऑटोमेटिक ये है सर urgency in this case, my lord. This honorable court only given permission to the RTO Jabalpur for issuing of the temporary permit as well as the permanent permit. But in the Bhopal and Hoshangabad there is no restriction there. Restriction, my lord. And they have restriction होगा. He is obtaining the stay, my lord. Petitioner is obtaining the stay. There is no power to RTA and RTO to grant the permit, my lord. similar issue, the Indore bench has pleased to decide and dismiss the writ petition, my lord. There is the Indore bench side. ये पहले बताया करो ना भाई. Yes, similar issue has been decided by the person, namely, my lord, Arun Singh, is a. I'm not concerned with the name. Yes. इसमें STAT का ऑर्डर चैलेंज में No. What happened in this case, my lord? Earlier in the year 2017, this honorable court has passed an order that is annexure P4 at page number 25. Lots of see first that order. पहले वो पिटीशन जो नंबर बोल रहा है वो दी. 44.8 WP 5957. देखिए इसको वेकेशन के बाद सुनते हैं क्योंकि अभी सुनवाई होगी नहीं, आज डिफरेंस भी है. This will take some time. My respective submit, my lord, interim measure, my lord, that is passed by in this petition, my lord, 5997, my lord, on 31/3/2022, my lord. They passed the another petition, my lord. साहब जब 8 महीने तक केस पेंडिंग पड़ा रहा रिजर्व फॉर ऑर्डर, तब तो आपने कुछ कहा नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि कोई भी कोर्ट 3 महीने से ज्यादा रिजर्व फॉर ऑर्डर नहीं रखेगा. दिस केस शुड हैव बीन रिलीज्ड और फिक्स फॉर रीहियरिंग इमीडिएटली आफ्टर 3 months. 8/4 को हुआ था ना, 7 अप्रैल को. 3 महीने में इमीडिएटली उसको जुलाई में जो है रीहियरिंग पे लगा देना चाहिए था. तब तो आप कुछ कहते नहीं. आज आपको सब कुछ रिलीफ चाहिए जब जो है आपको देख रहे हैं रेफरेंस है 3:30 बजे. सेकंड वीक ऑफ जनवरी में. No, मतलब what happening? सेकंड वीक ऑफ जनवरी में ये है एजेंडे पे, therefore then only on the basis of that petition. चलिए एक काम करिए, इसको लिखिएगा. Looking to the urgency of the matter, list on. 21 दिसंबर को लगा देता हूँ. आप ही की पिटीशन सुनेंगे, बाकी लोगों को परेशान होने दीजिए लास्ट वर्किंग डे में. और 21 दिसंबर 2000. नहीं, उनकी अर्जेंसी है, ठीक है. 21 दिसंबर permit should not be issued. That is their intention, Your Honor. That how they it may be. Please wait. You cannot prolong the proceedings unnecessarily. No, I am ready. 21 दिसंबर को, ठीक है, वेकेशन में बैठ के आराम से लिखा देंगे. It is made clear that both the parties on both the sides will choose one representative counsel to advance arguments on behalf of the rival parties, and each party shall conclude their arguments within 30 minutes each, and then the petitioner will be granted 10 minutes time to make his arguments in rejoinder. Your Honor, 5 minutes, at least 5 minutes should be given to me. And Your Honor, my petition was last time along with this petition. हमें नहीं मालूम. आप please. Today it is missing, Your Honor. It is not connected yet, so that may be connected along. नंबर दे दीजिएगा, लिस्ट along with WP 7906/2020. आप अपना एक प्रतिनिधि चुन लीजिए, वो बहस करेगा, एक आपकी ओर से करेगा, और वही प्रतिनिधि जो है 10 मिनट रिजॉइंडर. 1 घंटे 10 मिनट के ऊपर 1 मिनट नहीं सुनूंगा. लिख के दे दीजिए तो ठीक. वैसे 20-20 मिनट में करेंगे तो बेहतर रहेगा.
20-20 मिनट करिएगा दोनों को, 20-20 मिनट दीजिए, ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। I submitted the synopsis also. 20-20 and 10 काफी है। I will need 5 minutes, Your Honor. नहीं, I will not grant you 5 minutes separately, sorry. Because they actually both the side they have similar issues, Your Honor. Same they argue the same case actually. हाँ ठीक है, They don't have any difference in each other. हाँ ठीक है, बस तो Though they claim to be different. 45. तो भी छुट्टियों के बाद लिखिएगा। श्री Manoj Sharma, learned senior advocate, submits that let this case be taken up after ensuing winter vacation. On his request, list this Manoj Sharma, senior advocate, assisted by Shri Kaji Fakruddin, इधर से श्री विक्रम सिंह for respondent number 3 and 4, श्री अतुल द्विवेदी for respondent number 1 and 2. 1 and 2. Right. List after ensuing winter vacation. चलिए। In this case, I'm challenging the order granted passed by the London lower court as well as the appellate court by partially rejecting my application for interim relief, my lord. In this case, I have sought the interim relief with respect to not creation of third party as well as stopping restraining the respondent from raising construction, my lord. The learned court below has rejected the second leg of the argument, my lord. ये order कहाँ है? Annexure P10 at page 95. Annexure, आप लोग क्या हैं? Petitioner साथ? उनका We are the plaintiff, my lord. We are लिखना, इस पे लिखने की आवश्यकता होती है नहीं होती? my lord होती है। फिर We are the plaintiff. बिगर ऑब्जेक्शन की रजिस्ट्री स्वीकार कैसे कर लेती है ये? Let explanation of the concerned scrutiny clerk be called that when petitioners in miscellaneous petitions fail to disclose their status, then why default is not marked and petitions are accepted without default. Let this inquiry be conducted and delinquent be warned, punished suitably. हम बताइए अब ऑर्डर कहाँ है वो? Order is annexure P10. P10 or P12? P10, P10 is the lower court order. P12 is the appellate court order. P10 में क्या कहा? P10 95, my lord. I'll just refer the relevant portion, page 98 may kindly be seen, my lord. जी. Para 6. सर प्रथम आई नंबर 2/21 के संबंध में लाने के समक्ष यह प्रश्न है कि क्या प्रथम दृष्टा मामला आवेदक के पक्ष में है। इस संबंध में आवेदक वादी द्वारा व्यक्त किया गया कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय दिनांक 30/5/2005 को वादी पर बंधनकारी नहीं तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा 7/21 को प्रतिवादी क्रमांक 5 के पक्ष में समझ गए। अब उसके बाद में इन्होंने केस वाज फाउंड अपीलेट कोर्ट ने क्या कर दिया? अपीलेट कोर्ट हैज सिंपली अपहेल्ड द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नेड कोर्ट बिलो, माय लॉर्ड। अरे आपने इसको देखा इन्होंने क्या किया है लर्नेड कोर्ट ने ऑर्डर? यस माय लॉर्ड। मैं चीज तो कह रही हूँ उन्होंने कब्जे पे हस्ताक्षेप न करे तथा वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र व्ययित न करे, कह तो दिया। My lord, this is in my favor, my lord. I'm only saying, my lord, they are raising construction, my lord. It was an open plot. They are raising। आप 39(2)(a) में जाइए। जब ऑर्डर हो गया कब्जे में हस्तक्षेप न करे, अगर आपका कब्जा है तो they will not, and if they are interfering in your possession then your remedy is under order 39 rule 2A. My lord, may kindly have page 99, the direction given by the court below. आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 5 को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के अग्रिम आदेश के पर्याप्त वादग्रस्त भूमि पर अन्यत्र व्यतीत ना करे तथा वादी के को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में विलंब कारित ना करे, अन्यथा की दशा में स्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आदेश किसी भी प्रकरण पर वापस लिया जा सकेगा। किस तारीख का ऑर्डर है ये? दिस ऑर्डर is dated 29th July 21. कितनी एविडेंस हो गई आपकी इसके बाद में? 1.5 साल हो गया। एविडेंस हो गई आपकी? एविडेंस इज गोइंग ऑन, माय लॉर्ड। गोइंग ऑन मतलब अभी तक तो प्लेंटिव एविडेंस शुड हैव बीन ओवर। माय लॉर्ड, दैट आई डू नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन। यू आर डिलेइंग द प्रोसीडिंग्स। क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं है। जाके सूट कंक्लूड कराइए। बोल देते 3 महीने में, 1 महीने में आप अपनी एविडेंस खत्म करेंगे, 1 महीने में वो और 1 महीने में उसके बाद फाइनली डिसाइड करेंगे। ग्रेटफुल माय लॉर्ड, that will suffice. Petitioners after arguing for some time prays for withdrawal of this petition. It may be disposed with the director. However, he seeks direction to the learned trial court to conclude the trial expeditiously. Full stop. This prayer is not opposed by Shri Atul Dwivedi, learned panel lawyer for the state.
it is directed that petitioner's plaintiff, if not already concluded, shall conclude their evidence within 30 days from today without seeking any undue adjournment, and thereafter within further period of 30 days defendants shall close their evidence, and thereafter suit will be decided on its own merits within next 30 days. That is, within 90 days of communication of this order, all the proceedings of the suit shall be concluded by the trial court. Malo. Great. My lord, humble submission. Before creation of the estate of MP in the year 2000 Sambat, that is 1945, petitioner having the Hanuman Mandir, Hanuman Coop on the land. It was in the name of petitioner's grandfather, and thereafter it continued up to 84. Thereafter, without giving any notice. Issue notice. 2020 का order है, कोई urgency नहीं है. Issue notice. My lord, humble submission, my lord. They are trying to construct the land over Sorry, 2020 के order के खिलाफ आप आए, 2 साल बाद interim relief नहीं मिलता है. अगर urgency होती तो आप पहले आते. चलिए. Your Lordship, the instant miscellaneous appeal against the order passed by the Labour Commissioner, Your Lordship. You are. I am the employer, Your Lordship. As per the. आपने जमा करा दिया पैसा, mandatory requirement fulfill कर दी. You have to deposit the whole amount of compensation assessed by the commissioner before the commissioner workman compensation. Have you deposited that amount? Your Lordship, I have to seek instruction regarding. Shri Chalotre prays for time to seek instructions whether he has made mandatory requirement of pre-deposit before the learned commissioner under the Workmen Compensation Act or not. On his request, time is granted to verify list in the week commencing 23 January 2023. चलिए. Much obliged. My lord, MP under Article 227. Matter is today listed for order on IA number 16047, which is an application under Order 6. तो ठीक है, उसके बाद क्या decide करना चाहते हैं आप? My lord, I am seeking direction to the Court of Learned JMFC to decide my application under Section 173, subsection 8, and to ensure presence of respondent number 4 before the court itself. ये तो family dispute है ना? My lord, is it a family dispute or not? Yes, my lord. क्या criminal case चल रहा है? आपने क्या criminal case institute किया? My lord, criminal case under 498A and 494 against the husband and 498A against in-laws. कैसे डायरेक्शन जारी होगा उनकी प्रेजेंस एंश्योर करने के लिए? 173(8) में क्या एप्लीकेशन लगाई है? पेज नंबर, अगर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 173(8) is my lord, page number 52. Let us read that. My lord, shall I read it? हाँ, प्लीज. क्या चाहते हैं? अग्रिम अन्वेषण चार्जशीट फाइल हो गई क्या? Yes, my lord. फाइल हो गई है. My lord. देखिए, तो इसको सिर्फ डायरेक्शन कर देते हैं to decide this application, nothing beyond it. देखिएगा, श्री दीपक पंजवानी. Karthik Jaggi. Karthik Jaggi. My lord, there is also one small matter involved. The respondent number 4 is not appearing before the court. That they will take care. The process है वहाँ पर उसके लिए. My lord, I had on IA 16047/2022 seeking amendment in the petition. Same is allowed. Let necessary correction be carried out during the course of the day. Next para. Petitioner's only prayer which is pressed in this petition is that an application under section 173 within bracket 8 of Code of Criminal Procedure is pending before the Court of Learned JMFC Jabalpur in criminal case number क्या है? 762 RCT 7623 of 2019. RCT 7623 of 2019. Of 2019, and he be directed to decide the said application on its own merits expeditiously. This prayer is not opposed by Shri Trivedi. 7 days, 2 weeks. Oh, 7 days, 4 weeks. Chali. This court has not expressed any opinion on the merits.
number 50. क्या है ये? My lord, the complaint preferred by the petitioner before the grievance redressal cell of HPCL that has been dismissed, that is challenged in this writ petition. ये इनका Impugn- was he applicant? Yes, my lord, he was applicant, he was sent to group 3, his land was not as per mark. None for the petitioner. Case is adjourned. Shri Salunke, Naveen Kumar Salunke, respond number 1 to 3. 1 to 3. Case is adjourned. List in the week commencing 30 जनवरी 2023. Minor senior advocate Sri De Silva sir will argue the matter. He will not avail today. देखिएगा श्री आपका शुभ नाम बताइए. Ayush Gupta. Ayush Gupta prays for time as arguing counsel Shri De Silva is not available today. Case is adjourned. List in the week commencing 23 जनवरी 2023. And जी कौन सा बोर्ड है ये? आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड. बताइए कहाँ रिवैल्यूएशन का कहाँ प्रावधान है? जजमेंट लॉ इज वेल सेटल्ड. माय लॉर्ड, हमारा जो क्वेश्चंस हमने जो जिनके कितने नंबर मिले? उसमें माय लॉर्ड काट करके 0 दे दिया गया है, जबकि 0 दे दिया गया. क्वेश्चन नंबर 6 में माय लॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा किस पेज पर है ये? किस पेज पर है? पेज नंबर 26 पर है. जी मैडम. जी क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 पर है. टू डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. जी मैम. दे आर डिग्रेडिंग. मेटल डिग्रेडिंग होता है. अच्छा. दे आर रिड्यूसिंग. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सही तो दिया है 0. माय लॉर्ड, हमारे पास कौन सी किताब से लाए? लोक संशांक संरक्षण एमपी बोर्ड भोपाल. हाँ दीजिए क्या लिखा? जी आ रहे हैं, इसमें सही लिखा हुआ है. क्या दीजिएगा भाई सर? कहाँ लिखा है? सर these are degrading, these are reducing. Their oxides are alkaline. Their ये ठीक है. Displays is electropositive element. It is electronegative element. सही तो लिखे. 2 अंतर 0 क्यों दे दिया इनको भाई? जी आदरणीय. लिखिएगा. नोटिस जाएगा सर. Petitioner's contention is that question number 6 has been wrongly evaluated. He had marked correct answers as per the question bank issued by Lok Shikshan Sanchalanalay, MP Bhopal. जी where 2 of the differences between metal and non-metal have been correctly mentioned, yet 0 mark is given. Let reply be filed. ऊपर लिखिएगा क्वेश्चन बैंक taken on record. Let reply be filed by the Board of Secondary Education, for which notices be issued on payment of PF a registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. My lord, obliged. उसको रिकॉर्ड में लगा लीजिएगा. List in the week commencing 23 जनवरी 2023. Yesterday I have filed bylaws, Lord. जी. Yesterday I have filed bylaws as per the last order sheet, Lord. हाँ, क्या करना है इसमें? इसमें सर bylaws फाइल रिकॉर्ड पे आ गई कि कल ही फाइल किया है. नहीं वो तो ठीक है. इलेक्शन सेटिसाइड किस चीज का इलेक्शन है ये? कोऑपरेटिव दोनों को उसके लिए कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल में जाइए. इलेक्शन ट्राइब्यूनल है ना उसके लिए. पास ओवर कर लें सर. पास ओवर में क्या होगा? ये सर बायलॉज जो फाइल किया मैंने लास्ट ऑर्डर शीट देख ली. बायलॉज आ गए ना, ये लगा हुआ है सर. मेरे इसमें इनकम्प्लीट है. मैं पास ओवर में आप कर लें, मैं इसको लिया. फिर लिखिएगा. श्री आपका शुभ नाम बताइए. विष्णु चंद्र द्विवेदी इज नॉट प्रिपेयर्ड विद द मैटर.
Submits that his file is not complete. On his request, cases adjourned. List in the week commencing 30 January 2023. 64. Then Kumar. My lord, with due respect, my lord, the petitioner is, my lord, electrical contractor, my lord, working with the respondent distribution company, my lord. Now, my lord, in view of a purchase order, my lord, he supplied certain items, my lord, and worked some electrical work to them, my lord. Thereafter, my lord, to their satisfaction, my lord, the work was in, kindly have a look of page number 25, my lord. Page 25. 25, my lord. This is the verification report, wherein the work was done at their satisfaction, my lord. And thereafter, my lord, I raised the bill, my lord. Satisfaction kahan likha hai? My lord? Satisfaction kahan record? Yes, my lord. It is the typed copy is also there. उपरोक्त कार्य मेरी देखरेख में मंडल कंपनी के नियमानुसार उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया गया। कार के समय स्टे एवं पोल के गड्ढों की लंबाई चढ़ाई स्वयं से माप। This is done, my lord. I raised the bill, my lord, and after certain deliberation, it was agreed to be the payment of 28,32,000. वो deliberation? The deliberation means, my lord, ये correction किया है इन्होंने। अच्छा ठीक है फिर? Thereafter, my lord, time and again I reached them for the, my lord, the payment of my bill, my lord. In fact, I have issued a legal notice to them on 18/8/2022, my lord. The same was not done, my lord. Neither any response to given, my lord. Now, my lord, I could secure certain their internal discussions, my lord, wherein kindly have a look on page number 34, my lord. 34, yes. 34, my lord, wherein the junior engineer, my lord, apprised the chief general manager of the respondent company, my lord, wherein I read it from the very beginning, my lord, point number 1. विषयांतर्गत सौभाग्य योजना अंतर्गत संभाग अमर पाठक जी अधीन कट्ठा वितरण के अंतर्गत सन्निहित फीडर के कार्य प्रोजेक्ट हेतु सोएन शो के तहत कार्यादेश एसटीडी संभाग सतना को प्राप्त हुआ था, जिसकी एस्टिमेट शो है। कार्यादेश के पश्चात संविदाकार को कार्य हेतु आदेशित किया गया। कार्य पूर्णता के पश्चात संविदा द्वारा इतने रुपए सहित हेतु देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका पारित रिसिप्ट सोएन शो है। लेखाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रोजेक्ट क्रमांक बंद कर दिया गया है। This is 7/1/2022. So, my lord, they say they apprise एस की रीवा द्वारा अवगत कराया गया प्रोजेक्ट क्रमांक इतना बंद कर दिया गया है, जिसके कारण भुगतान किया जाना संभव है। उक्त प्रोजेक्ट के तहत ईआरपी एक्सपेंडिचर इंक्वायरी 99 लाख की बुकिंग प्रदर्शित हो रही। अनुरोध है कि प्रोजेक्ट क्रमांक की भुगतान हेतु खोलने की कृपा करें अथवा भुगतान हेतु मार्गदर्शन करें। This is their internal communication, no communication to me, my lord. My respectful submission is, my lord, there is no objection or anything with respect to my work, my lord. The quality. कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर है, जाइए आप अपना पेमेंट के लिए सिविल सूट फाइल करिए रिकवरी के लिए। My respectful submission, my lord, this honorable court, my lord, has jurisdiction. Those orders have not taken into consideration this aspect that in a contractual matter, unless you are able to show. Yes, yes. My lord, kindly have a glance just for a moment. P7, my lord. P7, page number. Page number, my lord, 35, my lord. These are the, my lord, the directions issued by honorable DB as well as the honorable single benches, my lord. इस तरीके का इनॉक्यूअस डायरेक्शन नहीं हो सकता है टू कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन। जब कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है उसमें आपके पास में अगर देयर इज अ वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन get it enforced. Definitely, उसके लिए सिविल कोर्ट बंद नहीं होगा है। Definitely there, my lord, but for efficacious remedy, my lord, this honorable court in honorable, my lord, the honorable chief justice in a division, my lord, I'll cite the judgment, my lord. हाँ बताइए। My lord. And even, my lord, honorable Supreme Court on, my lord, I'll just, my lord, supply that copy. Please. My respectful submission, my lord, the direction maybe should then, at least, my lord, they should put on notice, my lord, at least why my payment has not been done, because this is the internal communication. उसके लिए आपकी रेमेडी कहीं और है। My lord, the High Court is not meant for all this. They are never approached to the authority. नहीं ठीक है। Authorities तो हमने legal I'm not entertaining this petition. अब आप क्या बता रहे हैं, जजमेंट मेरे ऊपर बाइंडिंग है, ये ऑर्डर्स तो वो भी दे दीजिए, उसको भी डिस्टिंग्विश कर देता हूँ। ये इंटरिम ऑर्डर्स पेंडिंग नहीं है। These are not interim, these are the final orders. फाइनल ऑर्डर्स भी जिसमें कि कोई इशू लिस्ट डिसाइड नहीं की है, कोई लीगल इशू डिसाइड नहीं किया, they are not binding. Merely saying decide the representation, can it be a binding precedent? Cannot be, my lord, but this honorable court has, my lord, discretion as well as, my lord, sorry. Inherent jurisdiction under 226 of Constitution, my lord. That according to me, in a contract matter, and I'm well supported by honorable, not one by tens of authorities of honorable Supreme Court. When there is a dispute as to the payment, you will have to file a suit for recovery.
my lord, taking my lord's observation definitely, but the latest judgment of Honorable my lord then Chief Justice my lord Mohammed Rafi my lord, wherein specifically for the contractual matters my lord, they said that my lord can exercise their jurisdiction my lord under 226. My lord, फिर merits पे लिखा देते हैं, देखिएगा. my lord, I'll supply the judgment my lord, or maybe a liberty may be assigned to me my lord. देखिएगा, after arguing at length and being convinced himself that in a contractual matter, when there is a dispute as to the payment, remedy is before the civil court and not in the writ jurisdiction, raised for withdrawal of the petition, and accordingly it is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty to approach the concerned civil court. I'm ready. 55. Now, by way of the instant petition, I'm challenging the order annexed to P5, page 30, wherein over on Azul land, the provisions of MPLRC has been invoked and the petitioner has been found to be an alleged encroachment of the land. Issue notice, call for the reply. And I'm praying for interim relief, my lord, because they are demolishing the alleged encroachment. आपका बता दीजिए टाइटल कहाँ है उस जमीन पर. We have the jurisdiction, there's an error of jurisdiction. वो उसी लिए तो नोटिस इशू कर रहे हैं, नहीं तो पिटीशन ही खारिज कर देते. आपका टाइटल बता दीजिए, टाइटल बताएंगे तब इंटरिम रिलीफ मिलेगा. Any date returnable, my lord, within. Yes, returnable in the week commencing 30th January 2022. Obliged, my lord. 57. Yes, Lord, I am challenging the order passed by the Nayab Tehsildar, my lord, for eviction of the property, my lord. Yes. It is a page number 61, annexure P8, my lord. My lord, and he has also issued notice to evict the property, my lord. So what had happened in this case? The father of the petitioner had purchased a property to the name of his wife, meaning mother of the petition, my lord. Well, after his death, the petitioner has filed a civil suit claiming partition and permanent injunction before the civil court, my lord. My lord, when my application under 39(1)(2) was rejected, I have approached this honorable court for said relief, and that relief has been granted, my lord. Except P2 is the order, my lord. Then after my lord, page number, my lord, page number 21, my lord. क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है कि no third party interest shall be created, my lord. जी, my lord. Thereafter, that petition was finally disposed of, and this interim relief was allowed to continue till decision of the civil suit, my lord. Well, even after, my lord, this interim order, my mother has sold the property to Srimati Rasni Kanojia, my lord, which is private respondent in this petition, my lord. आपने अपनी माँ के खिलाफ 39(2)(a का दावा क्यों नहीं लगाया? नहीं, अरे भाई, there is a violation of the interim orders of the High Court. I have filed a contempt petition, my lord. I have filed a contempt petition before the High Court. Yes, my lord. It is still pending, my lord. तो उसके साथ लगा देते हैं इसको. नहीं, अभी eviction, what my submission, my lord. अभी eviction पे बस थोड़ा status को करना है, उसके साथ लगा दें इसको. साथ में contempt के साथ. नहीं, अभी उन्होंने eviction का notice दे दिया है कि हम खाली करा देंगे मकान. उन्होंने डायरेक्ट पुलिस अथॉरिटी टू गेट वेकेटेड दिस हाउस, माय लॉर्ड. की मां ने बेच दी ना प्रॉपर्टी. हाँ, उन्होंने बेच दी, माय लॉर्ड. हुआ तो हमको सिर्फ 2 मिनट और सुन लीजिए, सिर्फ 2 मिनट और सुन बताइए, माय लॉर्ड. देयर आफ्टर द पर्सन हु हैज purchased this property has approached the MP Housing Board. Yes. For eviction of my land, my lord. And Housing Board retained the Nayab Tehsildar to get vacated this premises without there being any provision. Nayab Tehsildar has issued notice to vacate this only on the instance of the letter issued by the MP Housing Board. There is no provision, my lord. ठीक है. नायब तहसीलदार कंटेम्प्ट के साथ परसों रख रहे हैं ना इसको, मंडे को कंटेम्प्ट का नंबर दीजिएगा. अभी दे देना. लिस्ट दिस केस अलोंग विद कंटेम्प्ट केस नंबर इतना ऑन 19 ही आएगा, 19 दिसंबर 2022. मतलब टिल देन आई मे बी अलाउड, मतलब स्टेटस को मैं कर दें कम से कम. ऐसा ना हो कि कल परसों खाली कराने के लिए आ जाए. मतलब छुट्टी वाले दिन कोई काम नहीं करता है. वैसे 5 डेज वीक चल रही है. चलिए. ये 2015 का कंटेम्प्ट 2015 का. आपके कार्यालय के लिए इंट्रोस्पेक्शन का बिंदु है, उनको कुछ मत कहिए. जी सर, सिविल. जी. Not in this case, I am seeking stay आपने of the एप्लीकेशन लगा दी है क्या? जी,
एप्लीकेशन लगा दी इंक्वायरी ऑफिसर के सामने? लगाई नहीं हमने, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के सामने लगाई, उन्होंने बगैर कंसिडर एप्लीकेशन तो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने लगती है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज टू डिसाइड. अच्छा, Lordship may kindly see my application lot that I have filed. जी Annexure P9 and P10, P9 page number 84. And without considering the application and without giving me any opportunity of hearing to file reply my lord, to the charge sheet, directly inquiry officer has been appointed. नहीं, वो सब में मैं नहीं जाऊंगा। आपका सिर्फ बिंदु ये है कि क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जब तक डिपार्टमेंट इंक्वायरी को स्टे कर दिया जाए। आई डायरेक्ट द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन दिस विद इन 15 days। तो लिखिएगा, श्री संजय के अग्रवाल, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। Petitioner's contention is that on the same set of charges, a criminal case is pending upon registration of case crime number 0123। यही है ना? FIR number 186 of 2020. Page number 39. 0186. अच्छा, सॉरी गलत नंबर हो गया। 39। I'm sorry. That is my lord, my FIR. That is your FIR. Yes, I'm sorry. FIR against you is P1 पेज 16 पर है। जी। केस क्राइम नंबर 10123 is registered at police station Khandwa Kotwali, district Khandwa, under section 354, 354A, 456, 294 IPC. Full stop. They submitted that on same set of charges, departmental inquiry is proposed, in which charge sheet, not only charge sheet is issued, but inquiry officer too has been appointed. Full stop. It is submitted that if both the proceedings are allowed to continue simultaneously, that will prejudice petitioner's case before the criminal court. Next para. Placing reliance on the judgment of M. Paul Anthony. M. Paul Anthony, it is submitted that That has been considered by court. M. Paul Anthony. M. Paul Anthony, it is submitted that departmental inquiry, Captain M. Paul Anthony versus Bharat Gold Mines Limited and another 1999 bracket में 3 SCC 679, submitted that departmental inquiry should be stayed by the competent authority. Next para. This petition can be, after hearing learned counsel for the petitioner, this petition can be disposed of that since inquiry has been instituted by the Superintendent of Police Khandwa, the petitioner shall make a representation to the said authority afresh within 7 days from today, which shall be decided by the Superintendent of Police, keeping in mind the law laid down by Supreme Court in Captain M. Paul Anthony within further period of 15 days. And the communication to the petitioner. My lord, this petition has been referred, my lord, against एक जजमेंट है कि दोनों साथ साथ चल सकती हैं। ऐसे तो वो भी है कि अगर सेम सब्जेक्ट मैटर है तो अबेंस में रखना है, वो भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जी सर। अगर प्रेजुडिस नहीं होगी तो जो इसीलिए उनको डिसाइड करने के लिए भेजा है। जी। My lord, this is a 482, my lord, against an order dated 2011-11-22, my lord, whereby our application under section, my lord, 311 of the CRPC for recalling of witness, my lord, PW1 have been rejected, my lord. क्या रिजेक्ट किया, पढ़िए। My lord, I am reading that one. My lord, I am reading from the page number 9 of writ report. प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन साक्षी अनुपस्थित, साक्षी अमित कुमार को समन जारी समन अदम तामील वापस प्राप्त, साक्षी अनुपस्थित। इस स्तर पर अभियोजन की ओर से पूर्व में परीक्षित साक्षी सूचनाकर्ता होबलाल का देहाती मर्ग इंटीमेशन और देहाती नालिश अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परीक्षण नहीं कराया गया तथा उक्त संबंध में साक्षी का प्रति परीक्षण भी नहीं हो सका। उपरोक्त आधार पर साक्षी होबलाल को पुनः परीक्षण प्रति परीक्षण हेतु तलब किए जाने का निवेदन किया गया। एडीपीओ द्वारा आवेदन का विरोध कर आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। आवेदन पर उभय पक्षों को सुना गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया।
प्रकरण में अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन की ओर से यस मालूम अच्छा अभियोजन की प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रकरण में कुल 13 साक्षीगण को परीक्षित कराया जा चुका है। एसडीओपी अमित कुमार भट्टी एकमात्र साक्षी है जिनका कथन होना शेष है। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य करीबन समाप्त हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश देना लेक्यूना फुलफिल करने के लिए 311 का आवेदन मेंटेनेबल है। दिस इज द लीगल इशू। माय लॉर्ड इनफैक्ट खुद ही लिखा है ना इसमें ओगलाल का मर्ग इंटीमेशन व देहाती नालिशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बंदों पर परीक्षण नहीं किया जा सकता। क्रॉस एग्जामिनेशन लॉ सेज दैट इफ एनी न्यू मटेरियल कम्स टू योर नॉलेज, यही है जी सर। तो लेक्यूना फुलफिल करने के लिए किया जा सकता है। 311 का यूज इतना बता दीजिए। My lord, it is not for the fulfill of lacuna, my lord. In fact, my lord, the certain query, my lord, which was to be made by the way of cross-examination could not have been made. वो lacuna नहीं कहलाता, फिर क्या कहलाता है? My lord, lacuna would be, my lord, this is my lord in the purporting to be a defense, my lord, which is to be created in the favor of the accused. It is not nowhere. The power, my lord, which was conferred under section 311, my lord, is very wide, and wherein, my lord, in order to occasion a failure of justice, my lord, on or either mistake of either party, my lord, that power could have been exercised. At any stage of any inquiry, trial, or other proceeding under this court, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case. So, my lord, my sole contention is that, my lord, in fact, my lord, there is some mistake, my lord, maybe on the part of counsel, that by the way of his wisdom, he could not have cross-examination on that point, my lord. So, my lord, that could have been exercised, my lord, by the way of 311, and my lord have been, my lord, in this case of Himanshu Singh Sabharwal and number of judgment I am placing, my lord. My lord, this is the judgment wherein, my lord, para, that is, my lord. Para? My lord, the para 17, my lord. The power of the, may I proceed? Please. The power of the court under section 165 of the Evidence Act is in a way contemporary to its power under section 311 of the code. The section consists of a two-part, giving a discretion to the court to examine the witness at any stage, and the mandatory portion which compel the court to examine a witness if his evidence appears to be essential to the just decision of the case. Though the discretion given to the court is very wide, the very width require a corresponding caution. In the Mohanlal versus Union of India so and so, this court has observed that while considering the scope and ambit of section 311, that the very usage of the word such as any court at any stage or any inquiry or trial or other proceeding, any person or any such person clearly spell out that a section is expressed in the widest possible term and do not limit the discretion of the court. However, as noted above, the very bit require a corresponding caution that a discretion power should be invoked as the exigency of justice require and exercise it judicially with the circumspection and consistently with the provision of the code. The second part of the section does not allow any discretion but obligate and bind the court to take necessary step if fresh evidence to be obtained is essential to the just decision of the case or essential to an active and alert mind, not to one which is bent to abandon or abdicate. Object of this section is to enable the court to arrive at the truth respective of fact that the prosecution or the defense has failed to produce some evidence which is necessary for the just and proper disposal of the case. The power is exercised and the evidence is examined neither to help the prosecution or the defense if court feels that there is necessity to act in the term of section 311 but only to serve the cause of justice and the public interest. It is done with an object of getting the evidence in the aid of just decision and uphold the truth. Para 90, my lord, further, we appreciate the fair stand of the states via so and so learned counsel for the accused person without therefore examining the correctness of the allegation made. We direct the case in the question so and so. We transfer and it shall be open to the session judge to either deal with the case himself or allowed in a appropriate manner. The trial will commence from at the stage when when the order of the stay was passed. The petitioner, who is the son of deceased in the peculiar fact of the case, is permitted to suggest to name to function, my lord. And
ultimately, my lord, the two witnesses, my lord, 30 to 33 have been directed to be examined. Further, my lord, in the case of this, my lord, in the case of my lord, this is Iddar and other versus my lord, 2007 volume 2 MP weekly note, my lord, 89. In this, my lord, same, my lord, the same para, my lord, 11, my lord, may kindly be seen. In this case, my lord. The object underlying, may you read, my lord? Please. Para 11, my lord. The object underlying the section 311 of the code is that there may not be a failure of justice on the account of mistake of either party in bringing the valuable evidence on record or leaving the ambiguity in the statement of witnesses examined from the either side. The determinative factor is whether it is essential to the just decision of the case. The section is not limited only for the benefit of accused, and it will not be improper the exercise of the power court to summon witness under section merely because the evidence support of the support the case for the prosecution, not that of the accused. So, my lord, if there is either mistake on the part either of the parties, my lord, just it can be rectified. Yes. ठीक ये बताइए. And I am taking only one opportunity, my lord. Any cost I could. एविडेंस जो हुआ सर 21/12/2020 को, उसके बाद 2 साल बाद एप्लीकेशन पेश कर रहे हैं और ऑलरेडी ये क्रॉस एग्जामिनेशन में लेंथ में पूछ चुके हैं सर, और ये लैकुना फुलफिल करने के लिए 311 की एप्लीकेशन लगाई है सर, और मात्र एक साक्षी बचा है. My lord, can I give 2 or more judgment? My lord, there is a full bench of our High Court which says, my lord, Supreme Court के ऊपर है क्या full bench? My lord, grateful, my lord. और इसमें नोटिस रिस्पोंडेंट नंबर 2 को नोटिस आया था सर. Your notice to respondent number 2. हाँ सर, लास्ट टाइम नहीं. In fact, sir, what you are saying that this is a counterblast to the proceeding for divorce which you took up. She appeared on 17 to 20, and then on 18/9/21 she files an FIR. So basically, when she comes to know about the divorce petition, she has filed in FIR. She has filed in FIR. दोनों पढ़े लिखे हैं, बुला लीजिए, देख लेते हैं, अगर बैठ के सुलह समझौता हो जाता है. सर एक बार नोटिस कर दें, उसके बाद देखें. नोटिस के बाद ही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको दोनों पढ़े लिखे हैं, they are highly qualified. The issue notice to the respondent number 2. इसमें कैसे जाएगा, वो प्रोसेस फी देनी पड़ेगी. प्रोसेस देना पड़ेगा. My registered AD on payment of PF within 3 working days, returnable 4 weeks. List in the week, list on fixed date देते हैं इसमें. List on 24 जनवरी 2023. None for the petitioner. किस चीज के लिए आएंगे? ये सुपुर्दनामा सर. Case is adjourned after 4 weeks. Issue notice, call for the record. This is रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन डेथ केस है, सिर्फ इनकम का डिस्प्यूट. तो सामने वाली पार्टी तो आएगी. आ गई क्या मैडम? लाइए, दीजिए. रिकॉर्ड भी आ गया. चलिए. एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब इनकम 8,182. मिस्त्री था, सेमी स्किल्ड से किया है. 8,182. डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? 14/8/18. क्या है ये ऊपर नीचे? क्या है? ये नहीं.
एक मिनट रुको, सब ऊपर नीचे कर दिया देखिए। 14/8/18 हैं? 14/8/18 14/8/18 8,182। इसके बाद एक और कागज पड़ा हुआ है, इसमें 16 तक का ही है। ठीक है फिर ये इसकी कैलकुलेशन हाँ और 30% फीचर लगा दिया, 25 लगेगा। हाँ तो मैंने 25 कर दिए हैं। हाँ 40 साल की एसी 15 का मल्टीप्लाई लगेगा, लगाया है। और this appeal is filed by the claimant being aggrieved of award dated 29/7/2022 passed by learned 19th additional motor accident claims tribunal Bhopal in MACC number 1528/2018. Full stop. It is submitted that learned tribunal has erred in construing income of the deceased at ₹6,000 per month, who was working as a mistri. कारपेंटर था, मिस्त्री था, मिस्त्री for an accident which took place on 14/8/2018. They submitted that at least wages of a semi-skilled laborer be taken into consideration on the date of the accident. Though mistri falls within the definition of a skilled laborer, and accordingly computation be made. Shri Gupta fairly comments that tribunal has wrongly applied multiple future prospects at the rate of 30%, whereas they will be at the rate of 25%. Next, Ms. Anjali Banerjee, Learned Counsel, appearing for the insurance company, supports the award. Next, after hearing Learned Counsel for the party and going through the record, full stop. There are 4 dependents on the disease. Tribunal ने भी 1/4 deduction किया है, 1/3 की। तो 1/3 ही होगा। सर इसमें एविडेंस में क्रॉस में भी आया है, इसने खुद ने बोला कि ससुर कुछ काम नहीं करते, साथ में ही रहते। ससुर के काम फादर सॉरी अभी नहीं, उसके क्रॉस में भी आ गया। आने दीजिए। When income is construed at ₹8,182 per month, then it will come out to ₹9,8,184 per annum. 1/3 deduction is to be made towards the living expenses of the deceased. Leaving dependency to ₹65,456. 25% is to be added towards future prospects, and then multiplier of 15 as applied by the tribunal will, when applied, takes total pecuniary compensation to 12,27,300, over and above which claimant number 1 is entitled to a sum of ₹70,000 under the head of non-pecuniary compensation, and claimant number 2 and 3 for a sum of ₹40,000 each under the head of loss of parental consortium, taking total compensation to ₹13,77,300 against a sum of ₹11,45,000 awarded by learned claims tribunal. Thus, there will be addition to the tune of ₹2,32,300, which will also earn interest at the rate of 6%. वो सब कर दीजिएगा। The above terms appeal. Sir, on request. हैं? हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, जवाब दवा आ गया है, लिखिए सर। Sir, चलिए नेक्स्ट केस। क्या हो गया? कॉपी आज ही ली। ठीक है, तो ऑन एडवांस नोटिस कर दीजिए। चलिए हाँ 62 ना जी।
None for the petitioner. There is no stay on the proceedings. इसको रिपोर्ट बुलवाइए, इसमें सूट अभी पेंडिंग है क्या? कोई स्टे है नहीं, सूट अभी तक डिस्पोज ऑफ हो चुका होगा। इसकी रिपोर्ट बुलवा के 2:15 बजे रखिए। So making a request in item number 76 that was withdrawn malos in the morning. My friend has an objection to that withdrawal. इनका क्रॉस ऑब्जेक्शन है। क्रॉस ऑब्जेक्शन को अलग से रजिस्टर करने का बोल देंगे उसमें, तो फिर हमारी अपील रिवाइवल हो जाएगी। 76 जी 76 हटवा देना वो। देखो अभी आएगा नंबर तो मेरिट पे बहस करिएगा। चलिए सर 1 लाख का इनका और हमें नहीं मालूम, बहस करिएगा। चलिए नेक्स्ट केस। In one of my case, my lord has taken a view that appeal lies under section 170, 127 of the Electricity Act. My lord has disposed of that petition. Here also similar objection has been raised by my friend. Only my lord that The only difference is, my lord, in this case is that the original order which we have brought on record as R1, R2, that he has not challenged in this petition. ठीक है, वो अपील में सब करेंगे। I would just pray, my lord, leaving all questions open, my lord. श्री अमल पुष्प श्रोती, learned counsel for the respondent। और बस ये सब राकेश कुमार तिवारी की जगह यहाँ पर अमल पुष्प श्रोती आ जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। जहाँ राकेश कुमार तिवारी आ रहा है, ग्रीष्म जैन साहब कॉमन फैक्टर हो गए, सेम ऑर्डर इसके अंदर रख लो कि गिर ना जाए। GP Singh. Lordship, in place of GP Singh, my name is mentioned in the causes. ठीक है ना? The IN number 8281, Lordship, is a application under order 22 rule 3, Lordship. The sole petitioner was expired, Lordship. क्या होना है इसमें? LR सुन के आया रिकॉर्ड में तो दे रहा जाएगा ना, इशू नोटिस ऑन आईए। No, इसमें नोटिस की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसके ये petitioner himself लिखिएगा, hard on IE 8281/22 application under order 22 rule 3 CPC, same is allowed, let necessary correction be carried out during the course of the day। ठीक है, उसमें आपको रिप्लाई वगैरह देना है कुछ? My lord, reply will have 2011 की है। My lord, actually it was dismissed, it has been restored on 14. Let reply be filed by the state within 227 में 4 weeks। नहीं, not to the IE, my lord, to the petitioner। आइए तो अलाउ कर दी, petition की बात कर रहे हैं। पिटीशन का रिप्लाई नहीं होता 227। ठीक है, तो कुछ कहना है कहेंगे। लिस्ट इन वीक कमेंसिंग 30 जनवरी 2023। ये अमेंडमेंट दे दीजिए वर्मा जी, अमेंडमेंट कर दीजिए। रिकॉर्ड नहीं आया, लेट रिकॉर्ड भी आपका शुभ नाम डालिएगा। मंगल पांडे। Record be called for. List this case along with the record. So meanwhile, IR to be continued. IR to continue in the meanwhile. List in the week commencing 23 जनवरी 2023। Apply. My lord, I am appearing for respondent number 4, my lord. जी। नोट इसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट है ना, डिस्प्यूटेड फैक्ट है, इसमें पैसा क्लेम कर रहे हैं, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग का काम दिया था 2010 में। Civil suit is the remedy, not for the petitioner. This petition is filed seeking। नोट इसमें मेरा एक ऑब्जेक्शन और है। वर्क वाज अलॉटेड टू दी कॉलेज
and he is the petitioner claiming the secretary of the society who was running the. देखिएगा क्या लिखा? Filed seeking a direction to the respondent authorities to make payment as training cost of Bharat Madhav ITC Satna under MES scheme along with 12% interest per annum. Next para. Shri, आपका शुक्र. Gopi Chaurasia. Gopi Chaurasia in turn submits that this petition is filed by the secretary of Shraddhanchal Society Satna, whereas work was assigned to the college. College. क्या नाम? Bharat Madhav ITI. Bharat Mata ITI. ITI. Full stop. Secondly, amount of payment is dispute. Amount of work and quantum of work and payment both are disputed. Therefore, petition such disputed questions cannot be decided in writ jurisdiction, summary writ jurisdiction of this court. Next, it is submitted that petitioner has a remedy before the civil court in as much as he is seeking enforcement of the contract, for which remedy is before the civil court, where parties will adduce evidence and prove or disprove their respective cases. Full stop. This submission made by Shri Gopi Chaurasia is just and correct in full stop. This is supported line judgment. Judgment. क्यों नहीं लाते? Sorry, madam. I was unconditional. Next pair. After hearing learned counsel for the parties, this contention is supported by judgment in dash dash, and therefore petition is not maintainable. Writ petition is not maintainable. It is dismissed as not maintainable. Our dismissal of this petition will not affect the rights of the petitioner or any other authority to file a civil suit. Obviously. 68 connected. Lord, in this, I am praying for after 1 week, Lordship, due to death in the family of the arguing counsel, Lordship. Shri Aishwarya Sahu submits that there is death in the family of the arguing counsel Shri B.K. Upadhyay, and therefore he prays for short adjournment. On his request, case is adjourned. List in the week commencing 9th January 2023. 59. डेथ की जगह ब्रीवमेंट लिखिएगा. It's amputation केस में राइट लेग amputation केस में. हाँ, क्या करते थे आप? ये दुकानदारी करता था. हाँ. और 70% परमानेंट डिसेबिलिटी माना है, लेकिन केवल इनकम के संबंध में 50% दिया है. और जो 2,50,000 वो था मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको नहीं माना है. 2,50,000 मेडिकल एक्सपेंसेस को नहीं माना है. नहीं माना है. तो केवल अपने से जोड़ के 88,000 रुपए समथिंग मान के. तो बिल्स कौन से हैं आप उनका मिस्टर रोहित, इनको देख लीजिए बिल्स को, कौन से जेन्युइन बिल्स हैं उनके, कौन से. तो लंच के बाद बताइए जी है तो इसको. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है. हाँ, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रिसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो. हाँ नहीं ठीक है, उसी से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देंगे, सब देंगे. इनकम है आल्सो नॉट बीन प्रॉपर, सब देंगे आपको, लेकिन वो बिल्स वाला एक इशू देख लें. यस मैम. रिकॉर्ड दे दीजिए, इनको देखने दीजिए. आप दोनों मिलके देख लीजिए रिकॉर्ड. हाँ देख क्या को. मतलब एप्लीकेशन आई है और अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 फॉर रीडिंग द नेम ऑफ सोल petitioner. क्या हो गया? This petitioner is already expired, sir. So other petitioner is required to be complete. आपको कोई आपत्ति है क्या? Heard on IA 11268/22 an application for implementing other persons as petitioner. Shri Aditya Adhikari, learned senior advocate, assisted by Shri Deepak Tiwari. Deepak Tiwari has no objection. For 6, I am for respond number 6 has no objection to the application. Same is allowed. Let necessary correction be carried out during the course of the day.
लिस्ट आपका जवाब अगर आ गया है मेरा जवाब आ गया, स्टेट इज द मेन कॉन्टेस्टिंग पार्टी दैट वाज एक्वायर्ड फॉर अस। स्टेट का आया नहीं आया Yes, state का meetings are complete, petition is admitted for final hearing, list for final hearing as per its turn and seniority. अमेंडमेंट इनको करना है पिटिशनर को। My reply is there, Lord. I am prepared for arguments as per my learned and my Lord's kind convenience. क्या हो गया? Clear termination of My agency. agency have terminated, my lord, by the LIC. Without, my lord, proper consideration of my reply, my lord. जी कुछ चेक हुए, कुछ चेक उसकी हमारे तो अपील होती है, वो अपीलेट ऑर्डर वो भी हो चुकी साहब, अपील भी हो गई। नहीं, अपील नहीं हुई तो that preliminary objection I have taken. On previous occasion they had approached this honorable court. This honorable court had granted indulgence कि आपने ये दस्तावेजों की कॉपी इनको नहीं दी, वो दस्तावेज दे दिए, फिर से ऑर्डर पास किया। No doubt appeal is there, but since this is a petition of 2014, I will not be pressing my objection on the ground of alternative remedy. तो मेरिट्स पे अब सुनेंगे, अब तो आप 14 से बाहर हैं, आपको आदत हो गई है, इसको वेकेशन के बाद सुनेंगे। जी सर। कोई थर्सडे लगा दें सर इस पे। हाँ, on request of Shri Manas Mani Tripathi, list this case on 19th January 2023. Could it be third week, Lord, because थर्ड वीक ही तो है 19th जनवरी। उसके बाद वीक commencing 30th लगा दीजिए सर, मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर आने की बहुत ठीक है। रश वर्क हो जाता है। ठीक है 2 फरवरी कर दीजिए। मेहरबानी मेहरबानी। त्रिपाठी लिख दिया है, मानस त्रिपाठी। त्रिपाठी होगा क्या? मानस वही को वर्मा ही रहने दो अभी। साहब रिप्लाई नहीं आई मैंने। 2015 में की है पिटीशन, कॉस्ट तो लगेगी। श्री अशोक कुमार गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री शिवम हजारे, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर द स्टेट। पिटिशनर नंबर 2 के लिए श्री इनका नाम डालिए, वो पिटिशनर नंबर 2। State has not filed any reply. The petition is pending over 7 years, subject to payment of cost of rupees 5,000 to be deposited in High Court Legal Services Authority. 15 days time is granted to file reply, failing which किन साहब को बुलाना है? Land Acquisition Officer, Mansagar Project shall remain personally present. List on 4 January 2023. 73 Your Lordship, in compliance with the earlier order dated 12/10/2022, I have already filed the retribution notice as the document number 1. Finally सुनना है इसको। कल सर। Vacation के बाद। I have filed the vacation के बाद। date. हाँ, अनूप कुमार सक्सेना, श्री चतुर्वेदी, परिमल चतुर्वेदी। It will take only 5 or 6 minutes. ठीक है, अब लेकिन आज वो रेफरेंस है इसलिए, नहीं तो लिस्ट दिस जॉइंट रिक्वेस्ट दिस केस ऑन 6 जनवरी 2023। मतलब इट मे बी लिस्टेड ऑन 9th और 10th में। क्या हो गया? सर मैं हूँ नहीं उसमें, मैं घर में एक फंक्शन है। अच्छा, 10 जनवरी कर दीजिए। 10 जनवरी 2 IR में कंटिन्यू करें। IR to continue। Lordship oblige। कुछ बचा है इस पिटीशन में अब? In fact, my lord, they have challenged the policy, my lord, of the Indian Oil Corporation, which provides for restructuring of dealerships. So, as far as the restructuring was concerned, that was done, but they are aggrieved by that. They are existing dealers, and they say that you can't take away our customers and give it to the new dealers. There is a policy of Indian Oil Corporation that if the dealer has got more connections than the normal viable number, then some of those will be shared with the new ones so that they can survive. कितना रखा है आपने वायबल नंबर? 8,000 12 और एरिया वाइज होता है 8,000, कहीं पर 11,000 ऐसे पता बताइए क्या करना है। Subsequently, Malas, after filing these petitions, Malas, I'll place these orders on record
two high courts, my lords. One of the Madras bench, my lords, and thereafter the Bombay High Court, my lords, has dealt with the same policy and as against the respondent corporation itself, and has found that the policy is incorrect and contrary to law. My lords, I'll place these two policies on record. When will you place them on record? My lords, I'll file a rejoinder, my lords, and if my lords could take आपका शुभ नाम बोलिए। Zubin Prasad. Zubin Prasad raised for and is granted 4 weeks time to file rejoinder list in the week commencing 6 फरवरी 2023। Grateful, my lords. Lordship, in this case, we have filed rejoinder, your lordship, on the last date of hearing, your lordship, an order was passed to file the rejoinder, your हाँ lordship. ठीक है फिर जी अब इसमें क्या करना है? इसमें your lordship, it may be taken up in next week or after vacation, your lordship. श्री प्रदीप कुमार देव Shivam Mishra. Shivam Mishra prays for adjournment as he is not prepared with the case. On his request, list this case after ensuing winter vacation. चलिए 76 फाइल बुलवा दी। Your lordship, next week इसलिए बोल रहा हूँ सर, इसमें IR भी है, इस कारण ज्यादा ठीक है चलिए कोई बात आगे भी ना बढ़ाएं इसका। हाँ ठीक। Your lordship, IR to continue. IR to continue list in the week commencing 9 जनवरी 2023। Oblige, your lordship. अब 77 चलिए हाँ 2 मिनट फाइल आ रही है। जी जी 77 They have the alternate remedy under section 44(1) of the MPLRC. None for the petitioner. Saurabh Soni submits that petitioner has filed his petition being aggrieved of the order of the Tahsildar. Yes, ma'am. And they have an alternative remedy under section 44 within bracket 1 of the MPLRC. Full stop. Taking these facts into consideration, petition is disposed of by relegating the petitioners to avail such alternative statutory remedy. Full stop. If appeal is filed within 15 days from today, then the appellate authority shall consider and decide the appeal on its own merit. 78 My lords, last date compliance में सब we have deposited also first and my lord vice is present my lord. काय के लिए बुलाया था वाईसी साहब को? वो रिप्लाई साहब वो नहीं आया टाइम। अब रिप्लाई फाइल हो गया? जी साहब हो गया तो बैठे हैं आप। ठीक है। In the reply, my lord, the respondent are agree, जमा हो गई? जी साहब, or agree to give the my lord substitute land. चलिए तो इसका आपको रिजॉइंडर अगर कुछ फाइल करना है नहीं इनके It may be disposed of with this the light of this document. श्री Alok Kumar Gupta. Alok Kumar Gupta, learned counsel for the petitioner. Shri Manaswani Verma, learned government advocate for state, along with क्या नाम है OIC का? PS मारपाची। श्री PS मारपाची, जिला शिक्षा अधिकारी शेड्यूल, district education officer schedule, is submitted by both the counsel for the parties that matter has been amicably settled between the petitioner and the respondent. My lord, in the light of document number R2, my lord, they have annexure R2, they have taken consent later. dated My lord, 12/22. In view of such facts and the consent recorded by both the parties as contained in annexure R2, nothing survives for further adjudication. Petition is accordingly disposed of in terms of the said consent of the parties. my lord, my prayer is that within stipulated time, my lord, as per the consent letter, within stipulated time, my lord, they can initiate the action. Mr. क्योंकि इन्होंने सहमत इस बात के लिए है। कितने दिन में करेंगे इसको? इसमें थोड़ी समय चाहिए। कितना समय चाहिए? 60 days, my lord. It is agreed that consent will be acted upon within 60 days from today. 90 days कर दीजिए, will be acted within 90 days from today कर दीजिए। चलिए 76 दीजिए।
बताइए क्या क्रॉस ऑब्जेक्शन है आपका? सर हमने सर क्रॉस अपील सिर्फ 2 वजह से फाइल की थी सर। हाँ, इसमें जो इनकम मानी गई है सर वो ये कम मृत्यु मानी। का केस है कि इंजरी का केस है? सर डेथ का केस है, 1 लाख रुपए और एनहांसमेंट चाह रहे हैं वो। 1 लाख रुपए जी। किस ग्राउंड पे चाह रहे हैं? सर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं दिया है और सर प्यार और स्नेह में भी नहीं दिया है मैंने सिर्फ तो आप ये प्यार और स्नेह से मांगिए ना, झगड़ के क्यों मांग रहे हैं? सर उसी से। ठीक है, तो 1 लाख रुपए आप एडमिट कर लो, उसको कंसेंट से खत्म कर देते हैं और क्या है। आप वैसे भी दोगे, हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ सर ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए तो सर विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो तो क्रॉस ऑब्जेक्शन तो उस पर भी सस्टेन करेगा। देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी being aggrieved of award dated 4th March 2016. Full stop. Claimants have filed cross objection seeking enhancement to the tune of rupees 1 lakh. Full stop. After some arguments, learned counsel for the insurance company accepts that they will pay an additional sum of rupees 1 lakh in addition to the amounts awarded by learned claims tribunal. And in view of such admission, appeal and cross objection are disposed of with the direction that appeal is disposed of as withdrawn. Cross objection is disposed of with the direction that appellant insurance company shall pay a sum of rupees 1 lakh over and above the amount awarded by learned claims tribunal, along with 6% interest from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment in favor of the claimants. सर एक लाइन ऊपर लिखा देते इनके क्रॉस ऑब्जेक्शन में कि द अमाउंट अवॉर्डेड डिजर्व्स टू बी एनहांस्ड इन लाइट ऑफ प्रणय सेठी, उसके बाद फिर मेरी प्रणय सेठी कर दीजिएगा, प्रेज फॉर एनहांसमेंट इन द लाइट ऑफ प्रणय सेठी। मैं प्रेयर आई वांट टू विड्रॉ माय लॉर्ड आइटम नंबर 03 103 विड्रॉ कर दीजिएगा। लिखिए श्री RS वर्मा राम सुफल वर्मा माय लॉर्ड प्रेज फॉर विड्रॉ। I also moved an application 16165 according to the IA 16165/2022, an application for withdrawal of petition is allowed and this petition is dismissed as withdrawn. I'm एक परमिशन दे दीजिए आ जाएगा 104 नंबर में। चैलेंज वर्मा जी का 64 नंबर रेगुलर लिस्ट लेंगे अच्छा ऐसी है हमारा तो नहीं आएगा जाए ना तो हाँ वो तो मालूम है, वो तो मालूम है। हाँ नहीं ऐसा जाता ही रहेगा भाई, हम लोग भी अलर्ट रहते ना। आगे नहीं अपल भैया 104 रिक्वेस्ट है बल्कि रिक्वेस्ट मैंने इसको राइट ये नाम नहीं आपने पढ़ा ही नहीं, ये एफिडेविट नहीं जरूर फाइनेंस हो जाएगा। एफिडेविट तो पुराना हम पूरा भी पढ़ रहे हैं कि आपकी फाइल निकाल जो मेन वाले निकाल ये भी ये जैसे तो भैया रिक्वेस्ट कर दिया ये इसमें नहीं करना था ये गलती से। और यार ये फाइल इसके साथ बात भी करके गया ना ये इसी के है ना नहीं यार ये तो अच्छा हो गया ये जो वाली सामने ऑर्डर क्षेत्र तो उस मोटी फाइल क्यों
वो ये रखो, ये नहीं है इसमें। अच्छा वो नहीं, फिर ये कौन सी है? नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अमेंडमेंट। हां हो जैसे ना हमको देखना है नहीं खाना हमें क्या भाई, इसमें मेरी भी अपील है जी। तो आज बोल दो